Lots of superstars in action here at National Bank Stadium as Lahore Whites take on Karachi Whites. Its AH Group presents Jazz Super 4G National T20 Cup. Yeah, before we carry on, let's have a look at the points table. Peshawar, no doubt, they are at the top. 3 matches, 3 wins, and a healthy net run rate also. Rawalpindi also 3 matches, winning 3 of them. Net run rate also very healthy. It's the 2 teams right at the bottom, not exactly the bottom, but they are right along with each other. Lahore Whites playing 2 and winning 1. Karachi Whites playing 2, winning 1. And the net run rate, Lahore Whites negative 1.59 with 2 points. That's where the concern is. And remember, top 4 teams will play the semi-final. Yeah, as we said, lots of stars are involved in this game. We see Sohail Khan, yeah, he's been a performer all throughout the year. He's performing at every level. Ahmad Alam has impressed us all. And Ahmed Shahzad, Umar Akmal is needed for Lahore Whites tonight. Saad Naseem, the captain, will have lots of pressure on him. Very good evening to everyone from National Bank Stadium as we head to a very, very big match. It's Lahore versus Karachi, and I've got the former women's vice captain, Marina Iqbal, alongside me. सबसे पहले Marina, आपको मुबारकबाद देंगे. आज पाकिस्तान विमेंस टीम ने मैच जीता है न्यूजीलैंड में, पहली विक्ट्री न्यूजीलैंड में. आप बीइंग द सिलेक्टर, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो. थैंक यू, आपको भी मुबारक हो और बहुत खुशाइन अच्छा स्टार्ट हासिल किया हमने. एब्सोल्युटली. अब आते हैं जो मैच गुजरा है, लाहौर ब्लूज़ की बात कर लेते हैं. सबसे पहले जिस तरीके से उनका ये टूर्नामेंट रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. अगर आज का मैच वो नहीं जीत सकते तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आज मैच आसान था. बिल्कुल आसान था और अगेन वही रेपिटेशंस हो रही हैं जो गलतियां करते आ रहे हैं. आई थिंक शॉट सिलेक्शन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, टेम्परामेंट, माइंडसेट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. क्योंकि बॉलिंग नो डाउट एक कह सकते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग में जहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज के साथ उनको बैटिंग करनी चाहिए, वहाँ पे ऑल आउट जा रहे हैं. वन डायरेक्शनल क्रिकेट नज़र आ रही है एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ प्लान्स. हाफ वे थ्रू हमें ऐसा लगा था कि स्कोर इतना है कि लाहौर चेस कर सकता है. और जैसा स्टार्ट में जैसे जो शॉट सिलेक्शन का आपने जिक्र किया, क्या इनएक्सपीरियंस लगता है आपको उनकी बैटिंग ऑर्डर में? आई थिंक इनएक्सपीरियंस से ज़्यादा एक जल्दी एक हरीनेस है जस्ट टू मेक एन इम्पैक्ट. एंड आई थिंक जो भी यहाँ पे आ रहे हैं ऑब्वियसली दे हैव बीन फेसिंग फेलियर्स, तो एक वो एडेड प्रेशर होता है कि मैंने आके कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल देनी कि मैं जो पिछला मेरा रिकॉर्ड है वो कवर हो जाए. आई थिंक थोड़ा सा वो प्रेशर और फिर ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस है. एंड ऑब्वियसली जहाँ ये स्टैंड करता है टूर्नामेंट आगे PSL है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स. बट अगेन अगर आप ये डिस्ट्रैक्शंस कट आउट नहीं करेंगे तो यही होगा जो आज हुआ. और पेशावर के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सेटल्ड साइड है. ऐसा लगता है कि हर प्लेयर को उनका रोल मालूम है, हारिस से लेके एंड तक. उन्होंने आज बेंच स्ट्रेंथ भी चेक की, लेकिन उसमें भी लाजवाब कर दिया सबको. बिल्कुल वही बात है जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, इफ्तिखार. आई थिंक एक्सपीरियंस है और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ यंगस्टर्स हैं और उनको एक पाथवे मिला हुआ है एंड दे नो कि क्या रोल है. जो आपने बात की, रोल डेफिनेशन बहुत क्लियर है और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते. हमने स्टार्ट में देखा हारिस जिस तरह ऑल आउट गए, साहिबजादा टू सम एक्सटेंट पहले स्ट्राइक रोटेट करते रहे, ही नेवर ट्राइड कि वो ओवरलैप करें उस चीज़ को. फिर जहाँ बॉलिंग की बात आ रही है, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, दे नो द कंडीशंस, दे हैव द एक्सपीरियंस एंड द स्किल, एंड प्लानिंग तो है, एक्सिक्यूशन अच्छी हो रही है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही पेशावर की जानिब से. आज के मैच की बात करते हैं. बड़ा मैच है, ब्लॉकबस्टर मैच है, हमेशा काफ़ी नज़रें रहती हैं और ऐसा लगता है कि कराची की बॉलिंग और लाहौर का टॉप ऑर्डर, इनका मैच पड़ने वाला है आज. बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ने वाला है. और अगर लाहौर की बात करें तो इट्स अ गुड थिंग कि अब टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्म करता आ रहा है, लेकिन इट्स अ वरिंग साइन एज वेल, क्योंकि अगर कराची की आप नए बॉल के साथ जो बॉलिंग है, जो डिसिप्लिन और एक्सिक्यूशन है, वो थ्रेटनिंग है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर लाहौर टॉप ऑर्डर. क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह अगर कंपैरिजन भी किया जाए तो सोहेल खान जिस तरह के बॉलर हैं, वो ही नोज हाउ टू टेक विकेट्स. और उसके बाद उनके साथ और भी बॉलर्स हैं. बैटिंग में अगेन आई थिंक के सारी जो बल्क ऑफ रनिंग है वो अहमद शहजाद की जिम्मे डाली हुई है. ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है लाहौर के पास. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट टू क्लिक एट द राइट टाइम. बात करते हैं, आपने भी सोहेल खान का जिक्र किया. आज उनके साथ शाहनवाज धानी भी हमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करते नजर आए. वो खेलते हैं या नहीं, ये हमें बाद में टॉस में पता चलेगा, लेकिन हौसला मिलेगा इससे. और आरिफ ने जिस तरह से स्पिन किया, लेग स्पिनर, उन्होंने सरप्राइज किया सबको, बहुत इंप्रेस भी किया.
देखिए धानी हैड अ ग्रेट सीजन इन कायदे आज़म ट्रॉफी एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कमिंग इनटू वाइट बॉल क्रिकेट। और लेग स्पिनर की आपने बात की, हमने सुबह देखा है शानदार परफॉर्मेंस थी उस्मान कादिर की। आई एम श्योर कि उन्होंने नजर रखी होगी और थोड़ा सा हमने जब बात की थी उस्मान से थोड़ी सी स्लोअर साइड पे जा रहा है। और रिस्ट स्पिनर जो है वो हमेशा कोई भी फॉर्मेट हो दे आर अ ट्रम्प कार्ड, तो आई थिंक कि इट्स अ वेरी वोकल पॉइंट कि वो इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। लाहौर की बात करते हैं, बहुत हेविली डिपेंडेंट है अहमद शहजाद पे और उन्होंने अभी तक किया है स्कोर, हर मैच में ऑलमोस्ट लगातार 4-50 किए हैं। उनके साथ तैयब ताहिर अच्छी फॉर्म में दिखाई दी हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका मिडिल ऑर्डर उस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है और अगर आज अहमद शहजाद पहले कहीं जल्दी आउट होते हैं तो प्रेशर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है और आई थिंक अगेन इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि टॉप ऑर्डर चलेगा या नहीं। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि जो भी प्रोफेशनल खेलते आ रहे हैं, अहमद शहजाद ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, टेम्परामेंट अच्छा है, कायदे आज़म ट्रॉफी इन्होंने अच्छी खेली, वही सारा मोमेंटम लेके चल रहे हैं। बट तैयब ताहिर की हमने बात की, इज एन एक्सेप्शनल क्रिकेटर स्पेशली इन अ शॉर्टर फॉर्मेट। वो प्लेयर हैं जो आके इम्पैक्ट इनिंग्स खेल सकते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ टॉप ऑर्डर चलता है या नहीं चलता, हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी आज स्पेशली लेनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, जिम्मेदारी का आपने जिक्र किया तो उमर अकमल का जिक्र करते हैं क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला था, 49 रन बनाए थे, थोड़ा स्लोअर साइड पे थे उमर अकमल, थोड़े रन्स किए लेकिन उस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल नहीं पा रहे अपनी टीम के लिए कि वो मैच विनिंग इनिंग खेल सकें। देखिए आई फील कि क्योंकि जिस तरह की रेपुटेशन उनकी है, ही वांट्स टू कम आउट एंड मेक एन इम्पैक्ट। जब ऐसा रेपुटेशन एक प्लेयर लेके चल रहा हो और अगर कहीं अप्स एंड डाउन्स आ जाएं तो वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना और डिसोन करना जरूरी होता है। एट टाइम्स यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा बेसिक्स पे आए और उसके बाद व्हेन यू फील द राइट मोमेंटम आप फिर उस रोल को अपना सकते हो। आई थिंक कि उमर के साथ थोड़ा सा ये हो रहा है कि ऑब्वियसली ही वांट्स व्हेनेवर ही गोज आउट ही वांट्स टू मेक एन एक्सेप्शनल एंट्रेंस, तो उस चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा ओवर फोकस किया हुआ है। आई थिंक कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स साथ अगर डेवलप करें अपने पार्टनर के, उसके बाद एक दफ़ा जब बल्ले पे आ जाता है बॉल तो फिर वो रुकते नहीं है, तो थोड़ा सा एक स्टेप बैक उनके लिए लेना ज़रूरी है। डेफिनेटली फोकस का आपने जिक्र किया, तो अभी फोकस है टॉस पे। चलते हैं सिकंदराबाद की जानिब। It's that time again. It's Karachi versus Lahore here at the National Bank Stadium, and all set for a great encounter. Important game in respect to the Super 8, which will take them to the semi-finals. I've got the two captains, Saad Naseem, Asad Shafiq, alongside Iqbal Sheikh, our match referee. And who has the coin here? Saad, you have the coin. Heads is the call. And it is tails. Saad, क्या करेंगे? हम बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे। पिछला मैच देखा आपने, काफ़ी स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, यहाँ पे इतना हाई स्कोरिंग नहीं है और वो भी डिफेंड हो रहा है, तो क्या रखा हुआ है माइंड में आपने? कितना जी बिल्कुल, पिछला मैच देखा जिसमें काफ़ी स्पिन हो रहा था, जैसे उस्मान ने आउट किए, स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिली थी, तो वही कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम में आउट करें और फिर उसको चेस करें। तो आपको लगता है कि यहाँ पे 130 140 जो है वो ऐसा टोटल है जो कि फाइट ला सकता है? जी बिल्कुल, 130 140 ला सकता है, फाइटेबल है, लेकिन कोशिश करेंगे कैसे कम में हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें। क्या चेंजेस हैं टीम में? कोई एक चेंजेस है, अहमद शहजाद हैं या साद खान की जगह। चलिए, गुड लक। असद, गालिबन आपका भी यही फैसला होता? नहीं, हमारा बैटिंग करने का प्लान था। बैटिंग का हमने कल के मैच में भी यहाँ देखा बैटिंग, हालांकि पिच दूसरा था कि डिफेंड नहीं कर पाए थे, तो फिर ये टोटल बड़ा ट्रिकी हो जाएगा इस सरफेस पे, क्या सोच रहे हैं? नहीं देखें, अभी आपने जिस तरह पिछले मैच भी देखा होगा और हमारे पिछले एक आध मैच में चेस करते में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि एज अ बैटिंग यूनिट स्कोर बोर्ड के प्रेशर के बगैर अपने बैट्समैनों से चाहते हैं कि वो बैटिंग करें इस मैच में। तो अराउंड 150 160 क्या है माइंड? जी बिल्कुल, जिस तरह पे चल रहा है हमारे जहन में ये 150 160 के बीच में जो भी स्कोर होगा बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे चेंजेस हैं टीम में कोई? जी, शाहनवाज दानी हमारी टीम में आए हैं। ओके, ठीक है, गुड लक टू यू। थैंक यू। So Lahore Whites have won the toss and they've decided that they will come out and bowl first. Is what Asad says that would be a good total. Let's have a look at the team. Marina, शाहनवाज धानी, हम बात कर रहे थे, उनकी वापसी हुई है इस टीम में। काफी फॉर्मिडेबल साइड है, ये ऑलराउंड साइड है, बैटर्स पूरे हैं, बॉलर्स पूरे हैं। आई थिंक ज़्यादा लीथल हो गया विद कम्बिनेशन ऑफ सुहेल खान एंड धानी अप फ्रंट। ऑब्वियसली ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इनके बॉलर्स के लिए और ओवरऑल बैलेंस्ड है काफ़ी। जहाँ तक बैटिंग की बात है, बैलेंस्ड है, नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस तरह इम्पैक्टफुल इनिंग्स कोई ज़्यादा खुरम या आजम खान एक बहुत मेजर फैक्टर रहेंगे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइड, बैलेंस साइड है, दे डोंट नीड टू वरी अ लॉट। एब्सोल्युटली, और ऐसा लगा कि जैसे असद शफीक भी खुश हैं पहले बैटिंग करके, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आए, वो चेज नहीं करना चाह रहे थे।
दोनों अंपायर्स रेडी हैं, लेकिन इनसे पहले हम लाहौर की साइड पे भी एक नज़र डालते हैं। काफ़ी स्टार स्टडी टाइट साइड है, पहले बॉलिंग करेंगे। उन्होंने भी एक चेंज किया है, साद खान लेफ्ट हैंडर को बिठाया, उनकी जगह अहमद शहजाद की वापसी हुई, जो लास्ट मैच गर्दन में दर्द की वजह से नहीं खेल पाए थे। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अहमद शहजाद पे, और अप फ्रंट यही मुकाबला होगा कि कराची की जो अटैक बॉलिंग है उसका, जो टॉप ऑर्डर है लाहौर की, उसका मुकाबला होगा। एंड आई थिंक कि इट्स अ गुड डिसीजन कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रहे थे कराची अपने ऊपर, लेकिन लाहौर के लिए अब ये एक अल्टीमेट चैलेंज होगा क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग। अगर टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं करता तो एक अच्छा टोटल पोस्ट करने में इनको दुश्वारी हो सकती है। जी हाँ, मुश्किलात तो होंगी क्योंकि अहमद दानियाल भी आज इस टीम का हिस्सा नहीं है। मरीना, जाते जाते वन वर्ड, कौन जीतेगा ये मैच? आई हैव अ फीलिंग कराची वाइट्स। कराची वाइट्स इज व्हाट मरीना सेज। चलते हैं अपने कमेंटेटर्स की जानिब। ओवर टू यू कम्स। You asked for one word, she said two. Karachi and whites. Thank you so much, both of you. Loved the show. And now all said for action out here. Khurram Manzoor, Ahmad Alam, the two openers, the usual suspects. Highly important that Khurram Manzoor's bat speaks tonight because he's been in a bit of a tangle. That's Ahmad. He's doing well. Been able to give the side a good start. And when you talk about young talents, he's right up there. Got a lot to showcase and has been doing that in the tournament. His partner, he's the Bulldog, 134 games. He's the senior pro. Lots of good numbers, 28 50s, 400s. T20 career speaks a lot. He's played at the highest level as well for Pakistan. We're talking about he's been in a sort of a triangle. Haven't really seen Khurram Manzoor's bat flowing runs the way we know. Amir Khan will continue or start off with the proceedings. It's a very good tie between these two sides because both of them have been giving hot and cold performances. Both of them rely on certain players. So it's going to be an interesting encounter. Salman Butt alongside me. Lahore Whites winning the toss and deciding to bowl. So you say one box ticked? Well, the trend, as far as the trend is concerned, maybe you can say that one box is ticked. But what we have seen earlier today, Peshawar, the ultimate team, has done otherwise. They batted first and they won the game. And after scoring a low total. And they're showing sides how to win games in different scenarios. Batting first, batting second. The captains are very clear when they say we have to play good cricket to win. And obviously it is very evident. It's very visible that the pitches over here, they do not present a challenge where it becomes unplayable. It's just that how you adjust to those conditions, how you adapt to the situation and do what is required, do what is necessary. Do not try to be over-ambitious. At times we have seen batters throw away their wickets by being over-ambitious. So this promises to be a very, very exciting encounter. Both teams looking for a win. Important game for both of the teams. And it's always been Lahore and Karachi where the players definitely they think about winning more than any other games, especially in the domestic circuit. Are you surprised with Karachi's decision to play an extra fast bowler, Shahnawaz Dhani? They already had Khurram Manzoor, Ghulam Mudassir and Sohail Khan. From what we've seen in the first game, how Iftikhar relied on two spinner specialists and two part-timers. Yes, they do have Asad Shafiq himself and a part-timer, the captain himself, then Danish and your favorite, Arif Yaqub. Let's start the game. Oh, that's a good ball. Straight away, shaping away from the right-hander. That's a wonderful start and well left alone. Credit to the batter, Khurram Manzoor, who just saw the ball all the way through and did not engage himself. At the very last moment, he just left the ball alone, just in time. It was a good ball from young Amir, who looks good every time he pitches the ball up with the new ball. Coming back to the extra fast bowler, maybe those wickets from Danish in the last game have given confidence to Asad Shafiq, where he might start to think that yes, Danish can fill in as a spinner himself. He can bowl a couple of overs. Then they have a very good leg spinner who's been doing well. So maybe
they've had problems with the batting, so they just are going with an extra bowler, looking to take wickets this time. Maybe a shift in strategy. Straight away runs, and that's well done. He puts a lot of power in the shot, apart from the timing that he has. Makes it difficult for the man at a wide third to cut it off. He's got fast hands, Khurram Manzoor. Well, if you look at his feet position, it is perfect for him to play this stroke. And the line definitely has to be a touch more either closer to him or either away from him. And also the length needs to be a touch fuller, because the movement is there. But if you pitch this shot, then he's obviously already, his ready position is a great one to play this cut stroke behind point. It was a huge discussion some time ago during the World Cup and otherwise age-old discussion. Players with good hand-eye coordination. But then you would need, of course, your feet also to provide force into your shots. How are you placed? Your body weight on the back foot or on the front foot. So mostly good hand-eye coordination players we've seen are very strong square of the wicket. Stand and deliver. Good call. Should have been the non-striker's call, but the striker is calling. Yes, for most of the times, if you're looking to play square and get runs on the off or leg side square of the wicket, then you have to meet the ball closer to your body. You can't be away from your body, going too far ahead and then think of playing the ball square. Yes, the width can help you, or either it's on your pads or thigh pad or rib area, that can help you. And also the one on your full ball in your pads. But every time the connection has to be closer to the batter, under his eyes. Here's a pickup shot. There is protection. And just a single. Ahmad, firstly, I start with praying that there is no commentator's curse, because this kid looks absolutely wonderful with his technique, and his stroke play is that of a pure batter. Ahmad has impressed everyone with his beautiful stroke making and lesser risks involved in his big strokes even. And down the leg this time, looking to swing the ball from leg stump and even further away from that, which never happens. And this is seen almost in every game where there's a bit of swing, especially the younger fast bowlers. They look to swing it even more from the leg side if they are swinging it away. And this is something that comes with experience, that if the ball is swinging, just be moderate, just keep bowling in the right channels. Over completed. 7 for no loss. Lahore Whites beat Lahore Blues in the previous outing. He didn't play Ahmed Shahzad. Imran Dogar played in his place and had a good knock. 45 runs for him, so good to have bench strength available. So it seems as if not the batter, the place is in form. Whoever plays in his place is scoring runs. So it's the number, it's the seat, not the man. Could be, could be. Tayyab Tahir also scored runs in that match. It's coming back to Ahmed Shahzad. After a long time, I've seen him play the way he used to play, the way he's known with his talent, the stroke making, the execution of big shots, so pleasing on the eye, and such fluency when he plays. And he's just recently, in the last 3 or 4 years, starting to look what Ahmed Shahzad used to be when he was playing for Pakistan. Here's Saad Naseem taking a bit out of the previous match. That end had Iftihar and Usman Qadir taking wickets, so he straight away brought Irfan into the attack, the left arm spinner from the University Road end, looking at some turn and grip from this side.
If the Khar was of the opinion after the match that it was very tough to handle the spinners, you just can't go for those big hits. And he's probably passed on some information to the next teams. Certainly did not pass it to his opponents because they just kept going after the spinners and giving one wicket after another. Well, you have to be a good, you have to have a good observation while you are in the field, what's happening, how the batters are getting out, which bowling is effective. And that is a very, very important part of you being a player. If you do not observe in the field what's going on this 22 yards where it all matters, then obviously you're not spending your time in the right way on the pitch. Again, that cut shot. He's very strong in that area, or it seems that way. Controls the shot, hits it hard into the surface, into the ground, and finds the gaps. Yes, this one was not very short, but yes, there was width, and Khurram Manzoor did not require much then. And he just eased it through the point region for a boundary. Oh, this one is going down the leg side. Very ambitious appeal. New ball just carrying on straight, and the umpire gives him a good smile. Tells him that I know. Once again, it's pitching on leg stump and going further away. So no chance there for the bowler. And the keeper, he was bouncing as if it's a very close one. So Khurram Manzoor, we are talking about his ability to cut the ball. Look at the experience, 134 games, 3,600 runs. 28 50s and 400s. That's the most by any batter in Pakistan domestic circuit. I don't think anybody has 4 T20 hundreds in the Pakistan domestic circuit. So this is somebody who's playing since the first T20 that ever took place. And that's the over. 2 bowled, 12 for none, Karachi. I'm also interested, they've added young Habibullah into the side, but does he bat 4? Umair is doing well at 3. Asad has to push himself down. Where do you fit him? They tried him in opening slot as well. If you take him any further down than Asad Shafiq, then you're probably delaying Azam Khan if a situation arises. We shall all know when he comes and bats, and we'll see how he responds to the position that, or the role that the captain and the coach must have given him. Meanwhile, one of the very elegant players, the young players, even I've played along with him. He was playing for Sui Southern Gas, and so we were played in a list A game in Islamabad. I was playing for Wabda and Ahmad Alam playing for Sui Southern Gas, but very, very young at that time. And he's very elegant, technically good, scored a good knock even there. And he's been very impressive this season. Got 100 in Gaddafi Stadium. And here, I can't say too many good things. There's a chance that a batter might not survive. Yeah, saw some young talents. You mentioned Ahmad, there was Ali Imran, there was Jayed Ali. These guys were featuring in, I'm talking about T20s, came in PSL in a whole lot, distributed in various teams in the emerging categories. And then we were discussing this the other day, that it surprises me that this was back in 2017 or 18 and still have only 11 T20 games. So the talent which is
in heavy numbers in subcontinent. You see, that is where those 6 teams come in, because there were not many outlets and many youngsters could not get a chance to get through that. It is a wonderful thing to have competition, but then there should be other competitions as well, where more youngsters can be seen on platforms where they get to engage with seniors and international cricketers, like this one here. So once you move to PSL, everything is like graduated to a next level. He's bowling it a little wide outside the off stump and further taking it away. So it's just it's out of reach and he's fishing for it. His stance and the stroke again, but very slow. So Sikandar, the interesting thing is when you are seeing a bowler bowl away from your off stump, he wants that you should not control his line and length, and he's bowling away from your range. Then look at him. He is standing on leg stump. So he can go either middle stump or take off stump and get closer to that place where the line of the bowler, he can manage to hit that ball. Because this is not even a wide. This is just dot balls. Well, his senior partner is watching. He should tell him to change his guard. Absolutely. He can go up to him and ask him to get closer. He's got the toe end of the bat. It's not gone anywhere and he's out. It has worked. Bowling wide outside the off stump and then the frustration creeps in. And no communication, sadly, from the non-striker. The most experienced cricketer in the circuit did not go up and communicate to the youngster even after watching 4 or 5 deliveries, and there was a specific plan for Ahmad Alam. And there's the front foot check, and it's absolutely perfect. And also the bowler Naveed is somebody who's made his debut this season in first-class cricket and also in this National T20 Cup. And he's also somebody with a very, very good action, good height, and bowls good away swingers. And this time he stuck to his plan. Very few bowlers have stuck to their plans and bowled 4 or 5 balls in one region. And this is the reward of being patient with your line and length. 13 for 1. So they've sent Habibullah at number 3, which means Umair bin Yusuf moves to 4. Good opportunity and platform for him. He's still in the power play. He's an opener. We saw him in the PGL. 3rd game for him. And a platform provided. Previous wicket, such a perfect case of building up to a wicket that you need against a batter who's having trouble in putting bat on ball and hasn't really changed the guard. And surprisingly, yes, Khurram Manzoor hasn't had a word with him. You clearly see the plan against Ahmad. Now he's bowled it within the stumps. Not one ball was bowled to Ahmad in the stumps. So once again we see Ahmad standing on the leg stump and playing all those balls away from the body, because the bowler is deliberately bowling away from the off stump, wanting him to go after the ball and where the face cannot be straight. And in the end, he again goes from his own place and only succeeds in getting the bottom edge. So a few inches, if his feet would have been in the right position, a couple of inches, and this ball would have gone over mid-off. The delivery before he got out on that he played and missed, there was a serious level of frustration in him that he is unable to put bat on ball, and that also forced him. He's trying to reach for everything that was wide outside. Khurram could have spoken with him. Yes, being a youngster who's not played a lot of cricket, at times you need ideas from the other end, and that is why the experience along with you is important. But Khurram, maybe he did not, the thought of speaking to his partner did not cross his mind, and it has resulted in the youngster
throwing his wicket away. He's got another youngster with him now, Habibullah. It's raining youngsters, and Khurram needs to talk to them. He just cannot stand like this pose, like he's standing on the beach. He needs to just keep talking to the youngsters. This one will be a single. He's yet to get off the mark because that was a leg by. You see, he's trying to make room and play it over extra. Irfan is also another experienced bowler, so it's a good contest between him and Khurram. Yes, he's got around 370 plus first-class wickets to his name. And definitely has control over his line and length. Yeah, he missed it. You could see the expression from Khurram. Full toss. Last ball अच्छा कर दे, last ball. सही अब ready रहना. That was quick, and that rushed on to Khurram Manzoor. 4 overs gone, 17 for 1. तो कराची कदम जमाने की कोशिश कर रहा है. हबीबुल्लाह इस अंदाज के फ्लिक शॉट खेलने की महारत रखते हैं और उनके लिए एक बड़ा मौका है जिनको आज टीम में शामिल किया गया है. दूसरी जानिब खुर्रम मंजूर हैं जो कि अब तक अपने उस अंदाज में नहीं आ सके हैं जो कि उन्होंने सीज़न इन सीज़न आउट साल रन स्कोर किए हैं. और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी है इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर दोनों टीम्स एक एक फतह एक एक शिकस्त हासिल करके पहुंची हैं और अब अचानक से पलक झपकते में मिडवे पहुंच जाएंगे टूर्नामेंट के जहां से स्ट्रगल करेंगी अगर टीम हारती रहेंगी. थोड़े ज़्यादा बेसब्रे लग रहे हैं खुर्रम. हर बॉल को बहुत ज़ोर से मारने जा रहे हैं. हालांकि ये इनकी खासियत ज़रूर है, थोड़ा एक्स्ट्रा पावर लेके आते हैं अपनी शॉट्स में लेकिन टाइम भी करते हैं. उसमें काफ़ी मिस टाइम शॉट्स हुई, फुल टॉसेस भी मिस हुए. हबीबुल्लाह ने जूनियर लीग में जो कि पिछले साल खेली गई उसमें भी शमूलियत हासिल की थी. अंडर 21 कैटेगरी से शामिल हुए हैं. उठा दिया हवा में पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए. बड़ा लंबा चेज है, 3 फील्डर गेंद के पीछे पड़े हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे. सो फाइनली हबीबुल्लाह को अपने हाथ खोलने का मौका मिला, रिस्क लिया, रिवॉर्ड भी मिला हबीब को. लेंथ और लाइन दोनों इनकी फेवर में थी, इसी वजह से कामयाबी हासिल की है फ्लिक शॉट खेलने में. कलाइयों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा क्रॉस गए और क्योंकि गेंद भी थोड़ा अंदर आ रहा था इसलिए बासानी शॉट को खेल दिया विकेट जोन में. ये अच्छी इंटेंट है, जहां भी लूज डिलीवरी मिल रही है, जो पॉकेट्स हैं अवेलेबल वहां पे ये बाउंड्री हासिल कर सकते हैं. अब तक अच्छी बॉलिंग हुई है इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर बड़ी हिट्स की ज़रूरत है कराची वाइट्स को. और एक टैलेंटेड खिलाड़ी को ऑलरेडी वो आउट कर चुके हैं जो कि इन फॉर्म भी थे और इस सीज़न की शुरुआत में अपने जौहर दिखा रहे थे. टेल अप है इस वक्त लाहौर की टीम की और वो कोशिश करेंगे मज़ीद पावर प्ले का फ़ायदा हासिल करना. और गो के एक चौका लगा है लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस को भी माइंड नहीं करेंगे. दूसरे जाने हबीबुल्लाह अपना इंडिविजुअल पॉइंट प्रूव करने का उनके पास मौका है
एक हिटर के तौर पर उनको टीम में जगह मिली है, पावर प्ले ओवर्स में आने का मौका मिला है। और खूबसूरत डिलीवरी, बाउंस मिला और पेस में बीट करती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। किसी मूवमेंट देखने में मिली, अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं, डेक को हार्ड हिट कर रहे हैं नवीद, और अवे मूवमेंट मिली थी, उसको चेस करने चले गए थे। इन कदमों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हाथों पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, लाइन को कवर नहीं कर पाए, शायद गाइड करना चाह रहे थे इसलिए बीट हुए, लेकिन अच्छा फॉलो अप बॉल था नवीद का। बिल्कुल विट ने दी, बेहतरीन कमबैक किया चौका कंसीड करने के बाद। नवीद ने वही 4 रन थे जो कि इस ओवर में लिए। 21 पे 1 कराची। खुरम पे ज़्यादा इन्हिसार होगा कराची का, एक अच्छा टोटल पोस्ट करना चाहेंगे यहाँ पे ताकि लाहौर को चेस करने में प्रॉब्लम हो। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, कराची के पास बहुत एक्सपीरियंस और अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं जो कि विकेट लेना जानते हैं। आज़म खान का भी आना बाकी है, दानिश मौजूद हैं, उसके बाद असद शफीक हैं। बैटिंग की कमी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए मोमेंटम के साथ। 183 बनाए थे इन्होंने, जो इनके टूर्नामेंट का अब तक का बेहतरीन स्कोर है डेरा मुलाद जमाली की निस्बतन एक कमज़ोर रैंक टीम के खिलाफ। और उधर से आपको इस बात का पता चलता है कि गो के इनके पास जिस अंदाज से आपने बताया कि वो टैलेंट से भरपूर हैं। अमाद आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसके साथ साथ आज़म, दानिश अजीज, सोहेल खान भी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन और गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। आहिस्ता हुई छूने के बाद विकेट कीपर के शायद ग्लव्स को, लेकिन लेग बाय के 4 रन हासिल हो जाएंगे। कबूल करेगा कराची? दोनों हाथों से कबूल करेगा। ये एक तोहफा दिया है आमिर ने, आगे गेंद जरूर किया लेकिन लाइन में चूक गए, उसका फायदा ज्यादा उठा नहीं सके, बल्ले से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन रन्स आ रहे हैं किसी भी सूरत में आए। पेस इनके पास मौजूद है, लेकिन अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो स्पेशली इस शॉर्टर फॉर्मेट में आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर खराब लाइन पर गेंद है, बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत तेज दौड़ भी लगाई है और डाइव भी, लेकिन इस सब के बावजूद मुनीब नहीं पहुंच पाए। बैक टू बैक चौके कराची के लिए, खुर्रम को भी एतमाद हासिल होगा तीसरे चौके के साथ। और ये खुर्रम के खाते में जाएगी ये बाउंड्री। जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पेस दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया खुर्रम ने, सिर्फ गाइड किया बिहाइंड स्क्वायर, जानते थे कि बहुत वाइड खड़ा है, फाइन लेग, 4 रन हासिल किए। इसमें कोई दोष आप फील्डर को नहीं दे सकते, लाइन बहुत खराब थी। एक और खराब लाइन पे गेंद और एक और मरतबा एक्स्ट्रा का रन कबूल करेगा कराची। ना सिर्फ ये कि आप दोष नहीं दे सकते, बल्कि बड़े दिल खोल के डाइव लगाई थी वहां पर नौजवान मुनीब ने, और ये बड़ा ज़रूरी है लाहौर के लिए जिस अंदाज की उन्होंने शुरुआत हासिल की है। दोनों टीम जिस तरह से हमने जिक्र किया, एक एक फतह एक एक शिकस्त कंसीड करके यहाँ पर पहुंची हैं, 2 बड़े शहरों को रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर लाहौर की ये टीम उनकी उस प्लेइंग 11 को रिप्रेजेंट करती है जो पहली चॉइस पे शायद आप ताबीर देते हैं। और यहाँ पर अगर आपको खेलने का मौका मिला है, चाहे एज ए गेस्ट प्लेयर या फिर आप अपने रीजन से बिलोंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो उन तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन है जो कि उस शहर में क्रिकेट खेलते हैं। कराची की दूसरी जानिब बैट्समैनशिप के हवाले से एक मिजाज होता था, चाहे वो मियादाद से, आसिम मुस्तफ़ा से लेकर मॉडर्न डे क्रिकेट में जिसको खुर्रम मंजूर कैरी कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से, 1.5 दहाई से वो सर्किट में मौजूद हैं। 2009 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, अब तक फिट और स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। सॉफ्ट हैंड से खेले हैं, खतरनाक अंदाज से भागे हैं और पहुंच जाएंगे। ये अच्छी गहमा गहमी थी दायरे के अंदर, जहां पर गेंद पर लपक के थ्रो करने की कोशिश की, रुकने का, संभलने का मौका नहीं मिला था फील्डर को। काफी कुछ चल रहा है मिडिल में, आमिर थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन करने में, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा इस्तेमाल किया था, सॉफ्ट हैंड से खेले थे, लेकिन कॉल में चूक गए, बहुत दूर थे। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो सीधा डगआउट की तरफ ही जाते। वंस अगेन अ वाइड। सो कराची लगता है कि इन तमाम एक्स्ट्रास की बदौलत अपने इस टूर्नामेंट के लोएस्ट
पावर प्ले टोटल से बियॉन्ड जाने के करीब पहुंच जाएगा अगर क्रॉस नहीं कर पाता। 38 उसका अब तक का लोएस्ट टोटल है, जो कि शाया निशान नहीं है जिस अंदाज की बैटिंग एबिलिटी इनके पास मौजूद है, लेकिन अभी भी वो मुश्किल मरहलात को गुजार चुका है। अचानक से ओवर बड़ा महंगा बन गया, ओवर कमिट कर रहे हैं, पॉसिबली यॉर्कर करने की कोशिश में डाउन द लेग साइड। पेस का कोई फायदा नहीं अगर आप एक्यूरेसी नहीं ला सकते, और स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में लाहौर ये गलतियां नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि इनकी बैटिंग का इनसार पूरे का पूरा टॉप ऑर्डर पे है। स्पेशली एमएच शहजाद पे चेस करना आसान नहीं होगा कराची की बॉलिंग के खिलाफ, इसलिए ये गलतियां जो हैं वो बॉलर के जिम्मे में नहीं आनी चाहिए। हबीबुल्लाह का खूबसूरत स्ट्रोक, पंजों के बल गए, बाउंस के ऊपर राइट किया और जैसे स्टेडियम भी फतह कर लिया इस चौके के साथ। दिलकश स्ट्रोक था ये, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक था। किसी भी टॉप ऑर्डर बैटर के लिए ये स्ट्रोक खेलना इस चीज की अक्कासी करता है कि आपके पास टैलेंट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, अच्छा बैलेंस था, गेंद को आने दिया और सिर्फ गाइड किया इस गैप में, पेस का इस्तेमाल किया। लाजवाब स्ट्रोक और उतना ही अच्छा कमबैक। ये लाहौर और कराची का मुकाबला है और दुनिया देख रही है। पावर प्ले मुकम्मल हुआ 36 पे। मरीना कराची का लोएस्ट टोटल है पावर प्ले का, लेकिन जिस अंदाज की बॉलिंग हो रही है, गो के आमिर ने कमिट किया डाउन द लेग साइड और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की इस पिच से, लेकिन वो कबूल करेंगे इस अंदाज की बॉलिंग को। पूरे 6 रन पर ओवर के औसत के साथ है, और जो पिछला हमने लो स्कोरिंग थ्रिलर ऑलरेडी देख लिया है, उसके बाद आप शायद इस बात को तस्वर कर सकते हैं कि इनको कुछ चांद तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। ये दरमियान में शायद कोई पहाड़ भी अबूर कर लें तो 150-160 पे एक चैलेंज पुटअप कर सकते हैं। रमीज जूनियर गेंद करने के लिए आए। पहले मैच में हमने देखा कि किस तरह उस्मान कादिर ने 5 विकेटें हासिल की, कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके माइंड में भी होगी, हेल्प जरूर मिल रही है। पूरे मंजूर की एक अदा का हमने पहले भी जिक्र किया था, और वो ज़्यादा भरपूर अंदाज से नज़र आती है। वो पहले अपने आप से बात करते दिखाई देते थे। हर बैट्समैन का अपना एक तरीका यार बैटर का होता है कि वो अपने आप को दोबारा से अगली गेंद के लिए मुश्तमा करता है, हौसले रीगैदर करता है। ये बाकायदा बोल बोल के शायद अपने आप से कुछ बात करते थे टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ तक मुझे याद है, और अब तो बाकायदा मुक्के मारते हैं ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ साथ बेताब होते जा रहे हैं। शॉर्ट गेंद मिल गई है, हवा में उठाकर खेला है, लेकिन एक कदम पहले गिर जाएगी। फील्डर ने भी हिफाजत के असूल के तहत रुक गए अहमद शहजाद के, कहीं गेंद को ओवर रन न कर जाएं। बहुत लेट रिएक्ट किया अहमद शहजाद ने, बहुत लेट, और थोड़ा हर्रिड ऑन हुआ था ये गेंद, इसलिए कंट्रोल में नहीं रख पाए, न एलिवेशन हासिल की न डिस्टेंस, लेकिन ये कैच होना चाहिए था, टाइम मिल गया था। आप देखें अब जाके जब हाफ वे पहुंच गई है तब इन्होंने रिएक्ट किया और उसी की अपॉलॉजी कर रहे हैं। और एक और सिंगल के जरिए से दूसरे एंड पे जाएंगे। जो इनके पास फायर पावर मौजूद है, उमर बिन यूसुफ जो कि इनिंग्स की इब्तिदा भी करते हैं, टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, उसके बाद उनका आना बाकी है, लेकिन कोई मजाका नहीं है कि आप आजम खान को इसके बाद अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दील करके भेजने की कोशिश करें और इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। आजम ने अपनी लंबी इनिंग्स में खेलने का पिछले में सबूत दिया था, गो के वो लेजी रहे थे जब रन आउट होकर वापस गए थे। दानिश अजीज भी लंबा खेल चुके हैं पिछले मैच में। असद शफीक का अदरवाइज इनसे पहले आना बनता है, जो बैटिंग ऑर्डर उन्होंने अब तक फॉलो किया इस टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन कोई मजाक नहीं है कि आप इसमें टिंकर करें। एक ही पे इक्तफा करना पड़ेगा हबीब को। थोड़ा एक्सीलेट करने की जरूरत है। 40 रन एक विकेट के नुकसान पे हासिल जरूर किए हैं 6.4 ओवर्स में, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम और जो डोमिनेशन चाह रहे थे मेरा ख्याल है वो हासिल नहीं किया कराची ने, इसलिए ये चेंज साजगार भी हो सकता है। दूसरी जानिब रमीज जूनियर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं,
सेंचुरी खिलाने में इन्होंने कामयाबी ज़रूर हासिल की है। थोड़ा ग्रिप होता भी नज़र आया, सुबह में भी थोड़ा स्लोअर साइड पे ये पिच रहा। स्पिनर्स को कैसे रोटेट करेंगे और ऑपरेट करेंगे साद नसीम, ये देखना पड़ेगा। बिग बूमिंग स्वीप के लिए गए और गैप तलाश कर लिया। सोने जैसा ओवर गुजरा था रमीज जूनियर का, लेकिन चौके से उनके बॉलिंग फिगर्स को खराब किया। 44 पे ये रिलीज शॉट थी इनकी, 2 मरतबा कट करते हुए बीट हुए रमीज जूनियर को। इस मरतबा माइंड बनाया हुआ था कि अगर थोड़ा सा विद इन स्टंप गेंद आया तो स्लॉक कर देंगे, और वही हुआ। लेंथ भी मिल गई थी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल। काफ़ी फ्लैट ये शॉट मारी थी इरफान और अहमद शहजाद के दरमियान 4 रन के लिए। अब तक जो 2 मुकाबले खेले हैं लाहौर ने, उसमें पहले मुकाबले में पेशावर के खिलाफ शिकस्त हुई थी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, और फिर लाहौर की डर्बी हुई जहां पे जीतने में कामयाब रहा था 5 विकेट से लाहौर ब्लूज के खिलाफ। लाहौर वाइट्स कप्तान साद नसीम आ गए हैं इस पिच की स्लोनेस से फ़ायदा उठाने के लिए, जहां पर जब आप बात करी थी उस्मान कादिर से पिछले मैच में जिन्होंने लाहौर ब्लूज को रिप्रेजेंट किया था। आते ही फ्लाइट देने के लिए गए, तीनों स्टंप्स एक्सपोज थे, तो वहां पर उन्होंने क्लियरली इस बात के हवाले से ज़ाहिर किया था कि अब जितना स्लो खेलेंगे उतना फ़ायदा होगा। इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आए थे खुर्रम मंजूर और अमाद आलम, और एक एंड से आमिर को चार्ज करने के लिए गए थे। खुर्रम मंजूर 2 चौके लगाने में कामयाब रहे थे, लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे अमाद, अपने जिस्म से बहुत दूर गेंद पे इन्फोर्स करने के लिए गए, और अब खुर्रम मंजूर उठाकर खेलने के लिए गए हैं, और फील्डर से बाएं गेंद गिर जाएगी। इरफान जब तक पहुंचेंगे दूसरे रन के लिए भी वापस। तो ये पावर प्ले का हवाल रहा। अमाद आलम को उन्होंने प्रेशर में डाला, नौजवान बैटर वहां पर ढेर हो गए, फ्रस्ट्रेटेड थे बड़े शॉट्स के पीछे जाने के लिए, और उसके बाद से एक डिसेंट पार्टनरशिप है जो 27 पे 34 की रन बॉल से बेहतर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पनप नहीं पाई अब तक। बॉलर के सर के ऊपर से सीधा और निकल जाएगी चौके के लिए। 50 भी मुकम्मल हुए कराची वाइट्स के। धड़कना शुरू किया दोबारा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। काफ़ी देर से एक्सीलरेट करने की ताक में थे खुर्रम भी और हबीबुल्लाह भी, लेकिन कुछ ज़्यादा साजगार नताइज हासिल नहीं कर पाए। इस बार सिर्फ अपनी पावर और कलाइयों का इस्तेमाल किया। आगे गिरा हुआ गेंद था जिसको सर के ऊपर से खेला है, और ये हमें शॉट्स अक्सर देखने में मिलती हैं क्योंकि खुर्रम ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जो इनकी ताकत है उस पर टाइमिंग पे कम ही शॉट्स नज़र आएंगी। लेकिन अब ये वो मरहला है जहाँ पे एक्सीलरेट करना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग काफ़ी बाकी है। Once again off the back foot, कदमों पे तेज है, फील्डर को भी तेज होना था लेकिन देर कर दी पहुंचते पहुंचते। बैक टू बैक चौके खुर्रम और कराची की खातिर। खुशाइन ओवर है, एक्सीलरेशन सही टाइम पे आ रही है, और ये मोमेंटम जो है वो लाहौर से अब दूर जाता नजर आ रहा है। थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बैक फुट पे खेला था, शानदार प्लेसमेंट इस मरतबा थी, टाइमिंग भी अच्छी थी। ज्यादा दोष आप दे नहीं सकते फील्डर को, लेकिन लेंथ को रिवैल्यू करना पड़ेगा साथ को। 5 ओवर में 21 थे, वहां से रिकवर किया है। आप बड़ी मुझे सॉफ्ट कप्तान लगती होंगी जब आप करती होंगी, दोबारा भी शायद करें। अब हर मरतबा फील्डर को इजाजत दे देती हैं कि दोष नहीं देते, लेकिन वाकई वहां पे बड़ा फासला तय करना था। मैं इतनी भी सॉफ्ट कप्तान नहीं थी लेकिन जहां जायज कुशन दे सकते हैं वहां दिया जाता है। क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया खुर्रम ने, 11 रन दे दिए साद नसीम ने पहले में 56 पे। A run rate of 7 runs per over. Last couple of overs have been very profitable.
Ramiz is an exciting prospect. The right-arm leg spinner. Khurram Manzoor took him on the last delivery of his first over. And then skipper Saad went for 11. Good crowd in on a Sunday evening. They filled the couple of enclosures that they're allowed to come in, making good noise. 3 fielders in the ring on the offside for Ramiz. This is a good contest for a Manzoor. Very, very good on that sweep shot. Irfan really hurried around the fence to stop that boundary. That's the shorter side of the ground, 65 yards on that side. Khurram Manzoor, a long way forward and down. He's got long levers. This is edgy. Habibullah will take it. Ramiz didn't deserve that. And the momentum shift is very evident. Nice flight and loop on it. It's just the agricultural hoik. Unlucky was the bowler, but such is the nature of this game, T20 cricket. Very exciting prospect though, Ramiz, I have to say. Puts a lot of revs on the ball and gets that bounce and zip off the wicket too. Like I said, this format is unforgiving. Real quality spinners, even when they're trying to tease the batters out of their crease, batters are fearless. This is building up into a very, very good game. The hype around this game, a typical Karachi-Lahore derby. It was a slow start for Karachi, but they picked up in the last 4 overs. Slow, settling into his groove is Salman Butt. Very good evening, Salman. It has been, thank you very much, Faisal. It has been a great start. Reasonable one with wickets in hand. Khurram Manzoor, the experienced batter, looking set and looking to attack the leg spinner. Playing it to the short third. 63 it is for 1 after 9. Gorgeous Sunday evening. It's a bit chilly. Perfect time to have a cup of tapal tea. That lounge has been pretty busy. Salman, you were outside. There's a bit of nip in the air. How about a cup of tea at this time? Yes, I'm just having it over here. Tapal tea is with me in my hand. And I think it's even better when you are doing the commentary on a game like which is Lahore and Karachi, a very interesting encounter. So tapal tea makes it even better. Saad Naseem, it's been expensive. This was a freebie, full and wide. And Khurram Manzoor is not going to spare these kind of gifts there. The momentum shift is very evident, like I said, and Karachi is riding on it. Yes, and Saad Naseem, although he's bowled well a number of times in the season, but he can struggle at times as well because he's not a regular bowler, and this time he's been swept and the fielder is after it, and he does well. Falls during the effort and will be an easy couple to Khurram Manzoor. Saad is a good bowler. He's still, you could still call him as a part-time bowler, but these two are good players of spin, especially Khurram Manzoor. You come to Karachi, you expect players from Karachi will be good players of spin. So Khurram Manzoor realizes the situation and looking to put pressure on the Lahore skipper. And again, beautifully crafted, just gave himself some room, but then went straight down the ground over the head. Yes, he made space to clear his bat path, and then we saw a wonderful bat swing. There it is, the replay. Presenting the full face, going straight down the ground, and no chance for any fielder.
Khurram Manzoor using his experience to create those positions and play shots like these, and this one has been pulled through mid-wicket, and this will, or might be, yes it is, another boundary. Struck it beautifully. The good thing is Khurram Manzoor has realized the moment that Saad Naseem has come in, expecting that the wrist spin is doing well on this pitch, and Khurram has seized on that moment and put him under immense pressure. These have been beautifully crafted strokes. We'll come back to that after this delivery. And intelligent batting as well. Will be a throw. Oh, had that hit directly. We'll see in the replay. Khurram does not seem confident. He'll be thanking that the ball did not hit the stumps direct. And there we see the replay. And Khurram started running as he played the ball, but Saad, oh, he would have been out by miles. Why would you do that after hitting 3 boundaries? What's the need of a risky run? 15 of the over. Could have been curtains for Khurram Manzoor though on the 5th delivery. Not to be at the halfway stage. Karachi doing rather well, 78 for 1. Talking about the momentum that the Karachi innings has gained. In the first 5 overs, they were 21 for 1. In the next 5 overs has yielded 57 runs. And out of those 57, Saad Naseem has been taken to cleaners. He went for 26 of 2. And those projected scores, 9 and over, 168. A little hiccup there, one of the light towers has gone off. Players will get some refreshments in the meantime. But this innings so far from Karachi, innings of 2 halves. And this is the experience of Khurram Manzoor. When he got his eye in, he took his time initially and then he capitalized. Well, partnerships are the lifeline of any batting innings. And one is going on at the moment. After loss of Ahmad Alam, both these batters, Habibullah in his first game, he's got 17. He still can better his strike rate, obviously. On the other end, the experienced Khurram Manzoor is 48 of 34, and that is where the momentum of the Karachi innings has come from. It's Khurram Manzoor. And on this track where we have seen spinners do really well, and Khurram's experience is vital for Karachi to get to a decent total. Plenty of fireworks, like I said, in the second half of that innings. Started off quietly. Ahmad Alam was expected to do a lot. He's been in good form. That tame dismissal, really not committing to the shot fully, away from his body, hit the bottom of the bat. Habibullah started off with a decent boundary, but then Khurram Manzoor took over. His assault against the spinners. There were some freebies there in the middle, but there were some really good strokes as well. Power of the man. He's got a bit of a swag about himself, Khurram Manzoor, when he plays in domestic cricket. 48 of 34. And young Habib, what an experience for him to share the crease with the most experienced player out on the circuit. 17 of 19. Lahore White's bowling card. Amir bowled impressively at the start, but then in the second over it was costly. 18 he gave away. Irfan 7 of his 2 overs. Very experienced Irfan. Naveed 2 overs 6 runs, and till here they were very impressive. And then came Ramesh Jr., who Khurram Manzoor went after, and he's gone for 14 of 2. And Saad Naseem, the most expensive bowler, 2 overs, and only 3 dots and 26 of him. And this is the problem. Definitely the technicians are looking after it, and they're trying to rectify whatever is wrong with this
pole of lights, and I must say it's still very bright. It must have been the playing condition that if one goes off you can't play, but it is still very, very bright. Yeah, I was amazed. I wouldn't even known if I hadn't looked in that direction. Looking in the middle, it's pretty bright, but you're right. Give good time to the Lahore boys to just regroup and talk about tactics. They're in 2 huddles over there. Some experience for these youngsters. Someone like Munib Wasif, who's playing at the big league for the first time. Yes, I wonder if what's the playing condition if the both captains agree to play in this light, because it looks quite all right. And the match is vital for both the teams. They both need a win. Yeah, definitely. All the officials are out there with the coaches. It's Sajid Afridi, the 4th official. Azaz Chima in the picture as well. Well, whilst all this has been worked out, we'll have a short break and we'll come back with live action very soon.
Welcome back to National Bank Stadium. All sorted. The light tower is illuminated again. And we're ready to resume. We were in a critical stage of this game. A break that might be good for Lahore, in my opinion. Let's check with Salman when he settles in. What do you reckon, Salman? Who would benefit from this break? Well, it's often the fielding sides because the momentum of the partnership gets broken, and the next 2 or 3 overs are very, very important, especially the leg spinners 2 overs, because Khurram is the one who knows the art of playing spin bowling much more than anybody else in this game. So these 2 overs will be important. And once again, not finding the gap, and the leg spinner is bowling to his field. That's the best thing about him. He gives the ball plenty of air and revs, and he should have been playing all the games. So glad to see we saw Salman bowling the craft, and now Ramiz and Arif Yaqub will be in action later. In the air, but over the top, and the chase will be in vain. Just a little bit of width allowed Habibullah to free his arms, and that boundary will give the youngster a lot of confidence. Well, he slashed hard, and definitely the width enabled him to play that stroke correctly, and it was a quicker one. And Ramiz, we are praising you for your lesser pace and more air, and this is something you don't have to do, and that is provide pace to the batters, especially under lights at the National Stadium. Oh, what a beautiful delivery. Keeper was all at sea. This is classic leg spin bowling. What a response after getting hit for a boundary. Well, he's been so unlucky. We saw him bowl at the Gaddafi Stadium where not many bowlers were getting wickets, and he took 6, and there were stumps and catches which were missed off his bowling. And here again, and this time, keeper and the batter both could not read the wrong one. A wonderful googly. Unfortunately for him, the keeper is a part-timer. And this time it's gone, and the part-timer takes a great catch. That was quick, and it didn't cost them much. It's 2 gone now for Karachi. A big leg spinner takes the wicket. Wow, this is some bowling. Ramiz not afraid to flight the ball, and that loop and dip, I'm sure there's no problem at this end, but the real drama happened when he let that ball go. Big fizzing leg break. It went up above the eye line, and then that turn was too much. Good catch in that occasion from Akhlaq. He redeems himself immediately. Habibullah gone for 21. Karachi 85 for 2. The sight of Azam Khan exciting the fans and giving another challenge to this very, very good leggy Ramiz, because Azam Khan, we all know, is belligerent against spin. You miss your mark by a little bit, and Azam will send you to the stands. Next up. Thank you. Azam want to come. Average of 24, but look at that strike rate, 142. He's also got 100 as well. Batting in middle order, that is some feat. He watched that one nicely. Another good delivery from Ramiz. 11 done, 86 for 2. There's the wicket for you. Big leg spinner, flighted delivery, and the batter edged it, and very well taken by Clark. And for a change, he takes one. All the commentator curses are working the other way around. If you praise someone,
they do something against them. If you get on to someone, they do good. It worked for a clock. It did. He took a good one on his right side, a sharp spinning delivery, taking the outside edge. And now Karachi need to build another partnership. I must apologize to Usman Khadir. I keep calling him Salman, but the point I was making is so much delight to see wrist spinners in action. In one evening, we've seen Usman, and now we've seen Ramiz, and it's not finished yet. We still got to see Arif. And just a month ago, we were all talking about the lack of resource in spin department in Pakistan. It's more outlets, more people, more talent, and more options, more work for the coaches. And if worked correctly, more bench strength for Pakistan. You can't say that none of them have just sprung up from nowhere. They're all experienced of their craft. Talk about Arif, talk about Ramiz. In mid-20s, know their craft. This youngster is also very talented. Munib Wasif. Khurram has been on 49. He's lost a bit of strike. I'd love to get to that 50 and then carry on, because that landmark is not of much use if he gets out now. Yes, and Munib Asif can swing the ball, and he is gentle medium pace, but when in flow, batters can struggle against the gentle medium pace with a bit of swing. So we shall see if there is any swing available, whether he's able to have one go away from Khurram. And there is the 50. Khurram gets to his 50 number. I don't know how many he's got. It's plenty of those. 29 Salman to go with the 700 and the 7th at National Stadium as well. 24th in National It's T20. so many. Let's call it so many. Yeah. He's been around from the advent of T20 cricket in Pakistan. He has been around. So, and he's done it so much. He's been a prolific run getter, a run machine in this format. Azam, what a sweet strike that is. Just bludgeons it, just a little bit of width, and he went after it. Azam Khan has arrived. Azam Khan is a very, very impressive, naturally blessed stroke maker, and he has plenty of power in his strokes and can hit the big ball very easily. Oh, either side of that fielder, that would have been going to the boundary. Just hit it straight to him. Once again, sweetly timed. And there we have Simon Toffel. And he's also doing really well. It is his first year in this frontline competitions of the PCB. And Zulfikar Jan, who used to play for KRL, was a wonderful keeper batter. He's doing a great job. Azam is once again placed it nicely. The fielder is scurrying around. Tumbling save. Umar Akmal has been made to work. He'll be in action later on. Look at his hands, all taped up. Reminds me of a festival. Used to be back in the days called Basant, when people were flying kites and all their fingers used to be taped. So I don't know whether he's been flying kites somewhere. The weather in February in Lahore is pretty much similar to the weather in December in Karachi. I don't know if he's been flying kites, you're right. Azam has once again got it off the screws. Ball flying off the middle of his bat, and he's only just started. The excitement is going to build and go to another level. 12 gone, 95 for 2. खुर्रम मंजूर को हाथ खोलने का पूरा मौका मिला है, क्रीज का भी पूरा इस्तेमाल किया, और जहां पर ज़रूरत थी शॉट्स खेलने की दूसरे एंड पे जमूद तारी था, वहां पर उन्होंने शॉट्स को इन्फोर्स किया और अपनी
50 मुकम्मल की है महज 36 गेंदों पे। इब्तदाई सफ़र आसान नहीं था, 5 ओवर में ये महज 21 रन बना पाए थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कदम जमाए और अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि ना सिर्फ ये एक्शन पैक प्लेयर्स के साथ खेलें बल्कि थ्रू एंड थ्रू पूरी इनिंग्स खेलने की कोशिश करें। दूसरी तरफ आखिरी 8 ओवर का खेल है और आजम चाहेंगे कि वो ऐलान करें कि शो टाइम हो चुका है कराची में। एक चौका लगाया अब तक, लेकिन अच्छा मुकाबला है आजम का ये इस लेग स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, जिसमें रमीज जूनियर ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए। ये अच्छी चेंज की गई है लाहौर वाइट्स की जानिब से, इनको ऐड किया गया है। यहाँ पे हमने देखा है कि लेग स्पिनर्स सक्सेसफुल रहे हैं। विकेट एक ही हासिल किए लेकिन सिर्फ 20 रन दिए हैं रमीज जूनियर ने, अच्छे कंट्रोल से बॉल किया। ऊंचा खेल दिया, आजम के हाथ में ये कुव्वत है कि लगता है गेंद अपने घर की जानिब खेल दिए। ब्रिलियंट बिग बूमिंग सिक्स, शो टाइम इन कराची। यह बहुत ही शानदार शॉट, ये बहुत ही बड़ा छक्का है, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का। छत पे जा गिरा है ये एबिलिटी तो है आजम में। अगर आप उनके जोन में बॉल करेंगे तो ये बहुत दूर पहुंचाएंगे बॉल को, और यहाँ पे ऐसा ही किया है, स्लॉक स्वीप किया है और ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है। अभी ये बॉल थोड़ा नीचे लगा है बल्ले के, इमेजिन कीजिए अकील अगर ये मिडल हुआ होता तो ये कितनी और दूर जाता। जोन में बॉल किया है, इनके एरिया में, यहाँ पे इनकी रीच है, जब ये रीच पे पहुंचते हैं तो ये बहुत दूर पहुंचाते हैं बॉल को। 100 रन भी मुकम्मल कर लिए हैं इस लंबे छक्के के साथ कराची वाइट्स ने। एक मरतबा फिर वहाँ पे मजबूर करवाया मुनीब को कि वो अपने बाएं जानिब जाएं, और जिस फैन फॉलोइंग का आप जिक्र कर रहे थे उसने भी दिलों को गरमा दिया है। आजम इस जमा उम्री में अब तक इम्तहान ही होगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि एट अ स्ट्रेच आपको रोज़ाना एक दिन छोड़ के 7 मैचेस मुसलसल खेलने का मौका मिल रहा है। ऐसे में आप अपना हर रंग दिखा सकते हैं। पिछले में उन्होंने इनिंग्स को लंबा खेला था, लेकिन वो शायद कुछ लेजी रहे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, जो यहाँ पे मैच खेला गया था। और अब मंजूर ने हाथ खोलने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन अगेंस्ट द टर्न और अपने जिस्म से बहुत दूर, शायद वो रियलाइज करते थे कि वक्त आन पहुंचा है कि चार्ज करें। आज दिन लेग स्पिनर्स की फेवर में रहा है। इससे पहले हमने देखा उस्मान कादिर ने 5 विकेट हासिल किए और अब रमीज जूनियर की दूसरी विकेट। अच्छी बॉलिंग है, यहाँ पे मसला इनको यूजुअली होता नहीं है और हुआ भी नहीं। अच्छी फ्लाइट से बॉल की है और जिस बॉलर ने फ्लाइट के साथ स्लो बॉल किया है उसको सक्सेस मिली है। बहुत जोर से शॉट मारने चले गए थे, लेकिन शायद ये आजम खान से सीखते, जिस तरीके से उन्होंने टाइम किया था तो रिजल्ट शायद डिफरेंट हो सकता था। लेकिन वापस जाना होगा शानदार 50 रन बनाकर खुर्रम मंजूर को 102 पे 3। डिमोशन हुई है उमर बिन यूसुफ की। इससे पहले हमने इनको देखा है नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए। आज एक नया रोल है, नंबर 5 पे एक फिनिशर का रोल दिया गया है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इनके पास कि वो जो फॉर्म इनकी खो सी गई है थोड़ी सी, उसको वापस लाएं। 139 की स्ट्राइक रेट है, 450 78 रन का बेहतरीन स्कोर है। काफ़ी स्किलफुल है, टैलेंटेड है ये। 513 रन बना चुके हैं और अच्छी कप्तानी साद नसीम की जानिब से। स्लिप ले लिया आते ही, क्योंकि स्पिन मिल रहा है रमीज जूनियर को। एससीसी टूर्नामेंट में उन्होंने अपना बेस्ट 78 बनाया। 2 जमा उम्र बैट्समैन मौजूद हैं कराची के लिए और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी भी वो 160 को टारगेट कर सकते हैं। 8 रन पर की औसत है, 7 विकेट्स मौजूद हैं। ऊंचा उठा कर खेलने के लिए गए लेकिन बच गए। उमर बिन यूसुफ, बड़ा एच लगा था। अपना कोटा मुकम्मल किया रमीज जूनियर ने, 2 शानदार विकेट्स हासिल की, 7 बाकी, 103 पे 3। अकील आज 2 बार क्राउड ने बहुत शोर किया है। एक जब इफ्तिखार बैटिंग करने आए थे और दूसरा जब आजम खान बैटिंग करने आए हैं। तो ये शो करता है कि क्राउड फेवरेट हैं ये दोनों प्लेयर। और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो इसी तरह चलते रहेंगे तो 158 बनाएंगे, लेकिन शायद यहाँ से 180 इनकी नज़र में होगा। यहाँ से कम यहाँ से बनाना चाहिए और अगर आजम खान खड़े हो जाते हैं तो शायद 194 तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि उनके पास
वो पोटेंशियल है, वो स्किल है, उतनी जान है कि अगर वो खड़े रहें तो रन आते रहेंगे। तो अच्छा लगा देख के कि आजम खान की जितनी फैन फॉलोइंग है और क्राउड जो है उनसे प्यार करता है, उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है। वो आपको देखने आए हैं, थोड़ा लंबा खेलिए, जरा उनको एंजॉय करवाइए। जिस तरीके से विकेट गवाई खुर्रम मंजूर ने, जोरदार तरीके से खेलने गए। अगर थोड़ा प्लेस करते या टाइम करने जाते तो शायद रिजल्ट मैंने पहले कहा कि डिफरेंट होता। मुनीब वासिफ अपने दूसरे ओवर के लिए आएंगे। बड़े लेट आए थे आज बॉलिंग करने के लिए। ऑलरेडी 6 बॉलर आजमा चुके हैं, साद नसीम अपने समेत। और पेस मिल गया, विट भी मिली। उमैर बिन यूसुफ को गैप भी तलाश करने का मौका मिला। पहला चौका लगाया उमैर ने। इस पेस के साथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगर आप बॉल करेंगे तो आपको रन्स होंगे। ये मुनीब वासिफ को बहुत जल्दी सीखना है, क्योंकि अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे खराब बॉल कर दिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अच्छा स्विंग, अच्छी प्लेसमेंट उमैर बिन यूसुफ के लिए। और शायद ये जो डिमोशन इनके काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनके पास लाइसेंस है, क्योंकि 7 ओवर के बाद आप जाके नेशनल बैटिंग कीजिए स्ट्रोक्स के लिए। स्विंग करती हुई गेंद आ रही थी स्टंप्स की लाइन में। यस, इससे पहले इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आमतौर पर आते हैं, लेकिन आज चूंकि इनके सामने ये टारगेट है जिसमें उनको एक टॉप स्कोर करना है जो कि 160 के ऊपर का होगा, तो बड़ा चैलेंज हो सकता है। याद रहे कि लॉर्ड वाइट्स ने भी खाल इस अंदाज का टोटल किया है, कोई बड़े टोटल नहीं हासिल कर पाई है। 180 के बियॉन्ड सिर्फ एक मरतबा कराची इस टूर्नामेंट में जाने में कामयाब हुआ है, वो 78 रन जहाँ बनाए थे डेरा मुराद जमाली के खिलाफ, उसमें उमैर बिन यूसुफ ने टॉप स्कोर किया था। आजम को विट मिली और हिटमैन बन गए। आजम के नारे बुलंद हो रहे थे और कैसे वेलकम किया चौके के साथ। लाजवाब बैटिंग है। इस शॉट को बनाया गया है, ये शॉट दी नहीं गई थी, अपने स्किल से इसको मनूवर किया और प्लेस किया है आजम ने। ये देखिए थोड़ा अपने आप को लेफ्ट लेग क्लियर किया, ये बॉल विद इन द स्टंप्स था ऑलमोस्ट, और उसको गाइड किया, प्लेस किया, टाइम किया है। शानदार बैटिंग है ये। और अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे, और सिलेक्टर्स भी आज ग्राउंड में मौजूद हैं, अकील कामरान अकमल कंसल्टेंट हैं, वैसे वो मौजूद हैं, वहाब रियाज भी मौजूद थे। अच्छा मौका है, स्ट्राइक रेट 200 की, इस शॉट से कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको। यस, आजम गो के इंटरनेशनल सीन या पीएसएल के सीन्स की वजह से पिछले 3 साल के दौरान ज़्यादा मंजर आम पर आए, लेकिन हम सब फेमसली जानते हैं कि क्रिकेटिंग फैमिली मोइन खान के साहबजादे ये हैं, और बड़ी क्रिकेट इन्होंने जो रमज़ान क्रिकेट ख़ास तौर पर कराची का खासा हुआ करती है क्लब क्रिकेट के फॉर्मेट में, वो पिछले कई साल से खेलते हुए आ रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने रेपुटेशन बनाई थी। गो के वो स्पॉटलाइट में रहे कई वजूहात की बिना पर, लेकिन कम से कम ये बात अच्छी है कि इस टूर्नामेंट के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तियाब है। उनके खुद के लिए ये प्रोडक्टिव है कि इसमें अपने इस एंगल का वो सबूत दे सकें जो कि उन्होंने अपने लाइट ऑन फीट रह के गैप तलाश करके अब तक दिया है। तो एक छक्का जो कि ऑन साइड पर बिग बूमिंग और कवर्स की जानिब भी चौका। क्या स्पॉटलाइट का जिक्र किया आपने, डेफिनेटली एक ऐसा स्पॉटलाइट है मोइन भाई की वजह से जो कि सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि इन्होंने अब अपनी पहचान बना ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनके अपने लिए भी, और ऐसा ही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इनको ऐसे ही मिलेगा जब खुद परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टार्ट मिल गया है, अच्छा कीजिए, अपना नाम बनाइए, मोइन भाई का नाम रोशन कीजिए। और उमैर बिन यूसुफ ने अपने टैलेंट का सबूत दिया, सारी लाइट उन्होंने अपनी जानिब ले ली है इस शॉट के साथ, स्टंप्स को एक्सपोज करके चौके को कशीद किया। 117 पे थी। महंगा ओवर, 14 रन आए मुनीब वासिफ के इस ओवर में, और सबसे अच्छे तरीके से ये शॉट खेला गया है, इनोवेट किया है, वेट किया और खराब बॉल को यूटिलाइज किया 4 रन के लिए। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, ये डिमोशन शायद उमैर बिन यूसुफ के बहुत काम आने वाला है। तो अगर ये अब तक के शॉट्स आपके दिलों को गरमा देने के लिए काफ़ी नहीं है, तो आपकी सोचों को तरोताज़ा करने के लिए टपाल टी का पूरा एहतमाम है हमारे कॉम बॉक्स में भी और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, और लग रहा है कि कुछ पुराने दोस्त आपस में बैठे हुए हैं हमारे साथ, हमारी तरह।
बड़ी गमा गहमी है, ये एक्शन पैक वीकेंड है जहां पर लाहौर कराची की डबल डोज, जहां पर पिछले मैच में कराची वाइट्स जीतने में कामयाब रहा, लेकिन आज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है लाहौर वाइट्स की। और जिस अंदाज से हम पहले बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ फेजेस में इनिंग्स गुजरी है, 5 ओवर में 21 रन, लेकिन उसके बाद कम बैक और अब एक प्रोग्रेशन में है कराची की इनिंग्स। इरफान आए पहले 2 ओवर में शानदार बॉलिंग करने के बाद और टीज किया एक तरह से आजम को, ऑलमोस्ट वो पोजीशन में आ चुके थे। इंटरेस्टिंग होगा दोबारा देखना, मुश्किल होता है, छोटी बाउंड्री है ऑन साइड पे, नजरें रखिएगा मिड विकेट और स्क्वायर लेके जाने। बहुत स्मार्ट बॉलर है इरफान, और अगर पीएसएल के गुरुज ये मैच देख रहे हैं तो इन पे नजरें रखिए, ये बहुत स्मार्ट बॉलर हैं, इनको बॉलिंग करनी आती है, लंबे कद के हैं, नया बॉल पुराना बॉल दोनों ही बहुत अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। पूरी जान के साथ उठाने की कोशिश की है, फील्डर जा रहे हैं इसके नीचे और बड़ी विकेट हासिल कर ली है मुनीब वासिफ के, महफूज हाथों में गेंद चली गई। आजम के लिए बड़ी बाउंड्री और दूसरी जानिब टर्न होती हुई गेंद बहुत ज्यादा साबित हुई। या इसी स्मार्टनेस का मैं जिक्र कर रहा था, ये जानते हैं बॉलिंग करना, अपनी पेस में थोड़ा तेजी लेके आए, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल किया, यहाँ पे मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बैड लक होगी अगर नो बॉल कर देंगे आजम की विकेट पे, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलता है आजम को आउट करने का। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तेज बॉल किया है और आसान सा कैच लिया है मुनीब वासिफ ने। अच्छी बॉलिंग, अच्छी क्रिकेट यहाँ पे लाहौर वाइट्स की जानिब से, क्योंकि आजम को आउट करना इंपॉर्टेंट था, 21 रन बनाकर वापस जाना होगा। 117 पे 4 कराची वाइट्स। दानिश अजीज आने वाले बैटर जो कि खुद अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन वो जो काम आजम कर सकते थे उन शूज़ को फिल करना किस अंदाज से कर पाएंगे, बड़ा सफ़र तय करना। 122 का स्ट्राइक रेट गो के T20 के लिए बेहतर है, लेकिन उतना रॉक एंड रोल नहीं है जो कि इसी सिचुएशन में कराची के लिए तमानीत का बायस होता। और फिर इनकी 6 विकेट्स बाकी रह गई हैं और आते ये बैटर जिस अंदाज की बॉलिंग हो रही है, कि बड़े गैप के बाद आए थे अपना तीसरा ओवर फेंकने के लिए इरफान, लेकिन उसी अंदाज से शुरुआत की पिछले ओवर्स में। बहुत अच्छा ओवर है ये इरफान की जानिब से, जिसमें बड़ी विकेट हासिल की गई, आजम खान की विकेट। देखिए अच्छा एक्शन, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन प्लेसमेंट उस तरह नहीं हुई और कैच दे बैठे मुनीब वासिफ को। अच्छी सेलिब्रेशन भी, क्योंकि सब जानते थे कि कितनी बड़ी विकेट है, कितना इंपॉर्टेंट है आजम खान को आउट करना। लेना स्मार्टनेस की बात हो रही थी इरफान की, तो जरा नजर डालते हैं कैसे इन्होंने सेटअप किया है आजम खान को। पहला बॉल किया है इन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, कट खिलवाया है, उसके बाद फोर्स किया है कि ड्राइव मारे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर थोड़ा दूर किया बॉल, यही स्मार्टनेस है। और T20 क्रिकेट में अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और स्मार्ट हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सब PSL जो पिक करने वाले गुरुज हैं कि इन पे नजर रखिए, ये बहुत टैलेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारे जो PSL स्काउट्स होंगे वो मैच देख रहे होंगे, इसलिए इन पे नजर रखना इंपॉर्टेंट है। ये काफी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग भी करते हैं, लंबे छक्के भी मारते हैं और समझदार भी हैं। और एक और विकेट हासिल कर ली, ये ट्रैप सेट किया था 45 पे और वहीं पे फंस बैठे दानिश। कराची के ऊपर फिर सन्नाटा तारी 2 विकेट्स के साथ इरफान की शानदार बॉलिंग। यहाँ डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि शॉट ऑन था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए सही तरीके से दानिश। एक बार फिर तेज बॉल किया था, यूजुअली नो बॉल करते नहीं है ये, इस बार भी नहीं किया। फील्डर प्लेस था वहां पे, ऐसे जैसे थोड़ा जैब किया, पूरा शॉट नहीं खेला है और नवीद ने अच्छा कैच पकड़ा है, इंपॉर्टेंट विकेट। और ये खुशी दीदनी है क्योंकि इस
ओवर ने मैच को काफी हद तक लाहौर वाइट्स की तरफ टिल्ट कर दिया है। बड़ी विकेट्स हासिल की हैं। आजम खान, दानिश दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं आखिरी कुछ ओवर्स में। 15 ओवर खत्म हुए, दानिश अजीज 1 रन बनाकर गए 119 पे 5। पांचवा नंबर बनता है असद शफीक का, लेकिन आज लेट आए हैं बैटिंग करने के लिए। जो इन्होंने काम करने की कोशिश की थी अपने नौजवान हार्ड हिटर्स को ऊपर भेज के, वो उन्होंने शुरू किया था, लेकिन कोई भी इनिंग्स ऐसी नहीं थी जो कि मुकम्मल इम्पैक्ट दे पाई हो। खुरम मंजूर 50 करके आउट हुए, हबीबुल्ला आजम दोनों ने 21 ईच किए, उमर बिन यूसुफ दूसरे एंड पर मौजूद हैं, और अब असद शफीक को एक मुख्तलिफ रोल को निभाना पड़ेगा। इनके पास भी टन्स ऑफ एक्सपीरियंस मौजूद है, जो कि T20 क्रिकेट के लिहाज से शायद इतने रिकॉर्ड्स आपके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस जो कि किसी भी टीम को सुकून और स्टेबिलिटी देता है, वो करने के अहल हैं। 92 का मैक्सिमम भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अपने स्ट्राइक रेट से बढ़ के कुछ काम करना पड़ेगा। और उससे पहले एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट आ गई है उमर बिन यूसुफ पे, जिन पर जिम्मेदारी आन पड़ेगी। जब तक दूसरे एंड पे आजम थे, उनको भी चार्ज करने का मौका मिल रहा था। नवीद को वापस लाया गया है। इन्होंने बहुत इंप्रेस किया था कायदे आजम ट्रॉफी में। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, अच्छी स्विंग, ये तीनों नवीद के पास मौजूद हैं। और ये जिस तरीके से आखिरी विकेट हासिल हुई, पूरा शॉट नहीं खेले हैं, ये सिर्फ उन्होंने जैब किया है, ऐसे शायद जैसे उनको मालूम नहीं था कि फील्डर वहां मौजूद है, और सीधा ही उनके हाथ में खेल गए। इंपॉर्टेंट टाइम पे ये 2 विकेट्स इरफान ने हासिल किए हैं। फिगर्स देखिए, 2 ओवर्स में सिर्फ 7 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए नवीद ने नए बॉल से। जगल किया और ऑलमोस्ट गेंद निकल चली थी रमीज जूनियर से, लेकिन अच्छा कमबैक किया। ओवरऑल फील्डिंग का म्यार बड़ा ठीक रहा है आज लाहौर के स्टेप में। आज स्प्रिंग रहा है, इन तमाम रेगुलर इंटरवल के हासिल करता है विकेट्स के साथ, और साथ साथ अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करते रहे। किसी बैट्समैन को गो के स्टार्ट्स मिले हैं, मंजूर ने 50 भी बनाया, लेकिन मुकम्मल सेट होने का मौका नहीं दिया। यार अकील, अब इंपॉर्टेंट है लाहौर वाइट्स के लिए कि इन 2 विकेट्स जो गिरी हैं, इनको कैपिटलाइज किया जाए, फील्डिंग जान से की जाए, कैचेस पकड़े जाएं, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी की जाए, प्रेशर को मेंटेन किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं अभी भी उमर बिन यूसुफ अच्छे टच में लग रहे हैं। जो शॉट्स हमने देखे हैं उनके बल्ले से, असद के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं। इसलिए यहाँ पे जो गिरफ्त है उसको ढीला नहीं करना है, बनाए रखना है। लगता है कि असद शफीक के आने से कम उमर बिन यूसुफ ने कुछ लंबा खेलने का फैसला किया, अदरवाइज वो अपनी बैटिंग एबिलिटी का पूरा सबूत दे रहे थे। सुहेल, आरिफ याकूब, आज शाहनवाज अली धानी भी टीम का हिस्सा है, उनका ना बाकी, और उसके बाद गुलाम मुदस्सिर आएंगे। तो अब अचानक से वो के वो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आए हैं, लेकिन वो ऐसे लेसन्स के साथ नहीं जा सकते कि हर गेंद के खिलाफ चार्ज करने की कोशिश करें। एबिलिटी ज़रूर है, शाहनवाज अली धानी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ मैक्सिमम्स लगा रखे हैं, और सुहेल खान के तो मिड विकेट की जाने फ्लिक्स को हम देखते ही हैं, लेकिन उससे पहले स्टेज सेट करके देना होगा आखिरी 2 ओवर्स तक के लिए। दो रन की कोशिश होनी चाहिए, अच्छी रनिंग रिक्वायर्ड थी। प्रेशर डाला था पहला रन तेज लेके, लेकिन शायद मिड वे ही डिसाइड कर दिया कि दूसरा रन अवेलेबल नहीं, ऑल्दो मिसफील्ड हो गई थी मुनीब से। असद काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, यहाँ पे 2 हो सकते थे। उमर अकमल और मुनीब दोनों ही आए थे, टेप्ड अप हैं, क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, इसीलिए ये सारे जो प्रोटेक्शन है ये उस वजह से अपनी उंगलियों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। हैंडी क्रिकेटर हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। फुल टॉस हासिल हो गई, और साथ साथ पॉसिबली बीमर भी अंपायर की जाने मुड़ के देख रहे हैं, जिन्होंने इशारा दे दिया अपने साथी अंपायर को कि वो इस बात का ऐलान करें। बहुत हाइट थी, ये नो बॉल गो के सरप्राइज जरूर हुए थे, लेकिन उसको भी 1 रन के लिए खेलने का फैसला किया। यहाँ जैसा मैंने जिक्र किया, इस प्रेशर को बनाए रखना है, लेकिन अगर आप इस तरह के आसान शॉट्स दे देंगे, आसान बॉल्स दे देंगे, फुल टॉस दे देंगे, नो बॉल्स दे देंगे, तो वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे जुल्फकार जान शायद अंपायर से कंसल्ट करें, लेकिन मैंने देखा उनको इशारा तो उन्होंने किया नो बॉल का। शायद उन्होंने अपने लेग अंपायर
साथ ही अंपायर राशिद रियाज से पूछा क्या ये वेस्ट हाइट से ऊपर है, और ऐसा लगा टीवी पे देखे कि है, नो बॉल है। और काशिफ जान को टेलीविजन अंपायर हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि वो फैसला करें। बज़ाहिर तो बहुत ऊपर है। अगर यहाँ पर मोहम्मद इरफान पाकिस्तान के तवील कामत तरीन क्रिकेटर भी होते हैं तो उनके लिए भी शायद नो बॉल होती। यहाँ तो उमैर बिन यूसुफ थे, अच्छी पोजीशन में थे गो के राशिद रियाज, लेकिन आमतौर पर इस तरह के डिसीजंस को प्रेफर किया जाता है टेलीविजन अंपायर की जानिब। लेकिन अकीन ये बॉल नो बॉल जो है ये रेगुलर भी दे सकते थे शायद, इसके लिए थर्ड अंपायर की उतनी जरूरत नहीं, बट ये इम्पैक्ट देखेंगे कि बॉल बल्ले से कहाँ टच हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि फुल टॉस डिप हो रही होती है, बैटर से नीचे की तरफ आ रही होती है, इसलिए ये जो डिले है, जो चेक है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये नो बॉल देना चाहिए। अंपायर हैं जो अपना हतमी फैसला देंगे, वो मैटर करते हैं, मैं मैटर नहीं करता हूं। आप कुछ और चीजों में मैटर करते हैं, लेकिन इस वक्त बार बार देखना पड़ेगा। अचानक से बड़ा सरप्राइज जिप किया इस गेंद ने। इस वक्त तक जब ये पहला इम्पैक्ट से जस्ट एक फ्रेम पहले का है, उस वक्त गेंद लग रहा है कि हैंडल के करीब है, जो कि उन्होंने अपने हाई एल्बो एक्शन के साथ सामने ब्लॉक करने की कोशिश की, और उसके बाद लगता है कि हैंडल पे लगने के बाद या तो गेंद डिप हुई है, और यूं ये टच एंड गो डिसीजन उस फ्रेम में बनता है। काशिफ सुहेल पे भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है, गो के इस पे सिर्फ एक फ्री हिट का दारोमदार होगा, कोई विकेट दाव पे नहीं लगी हुई। लेकिन अब चूंकि केस उन तक पहुंच चुका है, और राशिद रियाज भी शुक्र कर रहे होंगे कि वो टेलीविजन अंपायर के सौंप के ये जिम्मेदारी अब रिलैक्स करें। काफी कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि इस जो इम्पैक्ट है यहां से लग रहा है कि वेस्ट हाइट पे है बॉल, लेकिन आप दूसरे एंगल से देखते हैं तो ऐसा लगता है शायद ऊंचा है। मुश्किल डिसीजन अंपायर के लिए, इसीलिए वक्त ले रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि सही डिसीजन दिया जाए। या ये बॉलर के हक में गया है, नो बॉल नहीं दी गई है। मुझे ऐसा लगा पहले एंगल में कि शायद नो बॉल होगा, लेकिन किस्मत नवीद के साथ। असद शफीक अब तक मोहतात हैं और उनके लिए ऑन साइड पे पूरी प्रोटेक्शन मौजूद है, लंबी बाउंड्री है, और असद शफीक ने स्मार्टनेस के साथ निकालने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर फील्ड को अबूर करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। हर गेंद पर एक रन, 125 पे 5। बहुत अच्छी। Nine of 3. Mohammad Irfan has really been sensational tonight. He's varied his pace very nicely. He's very experienced. He knows his craft very well. Solid temperament as well. Really been the standout bowler for Lahore tonight. Good hustle in the field. Munib Wasif saves 2 runs. This game is on a knife edge. Good evening, Sikandar. Good evening, Shah. When you look at the first game, which was played in the afternoon, 133 was defended. I'm not saying that it can be done every time, but even at the toss, I was talking to Asad Shafiq, feel like 150 is a competitive score out there, keeping in mind how the ball is working for the spinners. But you have to be very disciplined if you want to defend a total like that, with this, which is around 130, 140 mark. Surely that they've lost their way, Karachi Whites, while batting first in their innings. They lost crucial wickets at a very important time. Good run taken.
Danish Aziz and Azam Khan going back to back has, yes, been a setback for them. Yes, indeed. Although we have to say that Lahore Blues' batting was very fragile. Lahore Whites stand a better chance. Good quick work. Good technique there. How about that? Did Umair lose his balance? Akhlaq was quick on that occasion. He's been pretty tidy with the gloves tonight. And umpire Zulfikar wants to have a look. Happens usually when you're trying to sweep something or play something, outstretching your body, weight of your body goes onto that front foot, which is your left leg if you're right-hander, and then you, for a fraction of a moment, end up lifting your heel, which is inside the crease. Not the heel, rather the toe. Look at them, so much space available. That's also a way to deceive a batter. There you go. So he's outstretched trying to reach the ball. Does that right leg go up in the air at any point in time? They're just trying to gain balance. I think he comes back just in time. Good glove work. But Umair is quicker than Akhlaq on this occasion. Official decision, not out. And the right one. But that was interesting where Irfan delivered that ball from. Just barely hit the batting crease or that box. That is a way to deceive the batter. Just vary his length and made Umair wait for it. Clever piece of bowling from a very clever cricketer. last ball acha kar de. 3 overs to go after this. Since Habibullah has been added to the total, that's a good spell. 4 overs, 2 for 14, in fact 15 for Irfan. 131 for 5. 5 are down, but you still have Asad Shafiq and Umair bin Yusuf at 6 and 7 number. Habibullah was given the chance to bat at 3, so everyone is pushed down 1 number. So they still have a good batting available. You got Sohail Khan after this. He can hit the big shots if required. The fall of wickets. That was a great delivery from Ramiz. From Manzoor. Getting right after scoring his 50. Played a good knock. Azam entertained. This is what he does. Let's say he got out at the wrong time, but that wicket of Danish Aziz was really a soft dismissal. He's been a big disappointment for most part of this tournament. Being a senior player, once again, in the big encounter, he went cheaply. Look at that mini collapse. 102 for 3 and then 119 for 5. We were discussing this at the start of the play, that spinners have had a save. Iftikhar got wickets. Pfeiffer for Qadir. Is Asad Shafiq correct in adding an extra fast bowler in Shahnawaz Dhani in his bowling unit? Even now, when you see, apart from Ahmad Alam's wicket, all the other 4 wickets have gone to spinners. So he would keep in mind. Now, if you see the bowlers available to Asad Shafiq, he himself is a part-timer. Danish Aziz is there. They've got Arif Yaqub. If you bowl all the overs, that will be 12 of these 3 gentlemen. That means then your 3 fast bowlers will have to share over. Somebody will be left out, not bowling the full quota. Asad Shafiq carves it away. Beautifully played. Just a little bit of room on offer. And Amir's pace was enough. Asad got it over the fielder. That is a boundary, a much needed one. These runs count, and this is a deliberate shot. He's angled the bat in a way to clear that backward point, using the pace. Yes, the fast bowlers haven't had much of a say. 18 boundaries and a 6 in this innings. Asad Shafiq has got
enough experience to know exactly what to do. He wants to get to that 160, 150, which he spoke about. Oh, that's gone through, but that'll be runs. It wasn't a bad ball, but nothing the keeper could do about it. The deflection was so much that he couldn't go back and grab that ball. He was wrong-footed. Shafiq is hurt as well. That was a terrific delivery. Once again, luck running for Karachi. Akhlaq was too late to react. He'd gone too far down the leg side. And then he wasn't able to react and do anything about this, as he had to change directions quickly. Those were given as leg by, so it won't go against Amir. But runs nonetheless for the team. 17 is the count of extras in this innings. 17 extras in such tight games. There are a lot of extras there. 3 buys included there. Again, opening the face of the bat, will be out. Good catch in deep point. Irfan takes the catch. He lost the ball in the lights, as he's suggesting, but the wicket has been taken. Asad Shafiq goes berserk. He's had 2 boundaries already to the team total, 9 of the over. He still wanted to go for the big one. Amir prepared to keep the ball full, not allowing Asad to get underneath it. No problem on the footfall, as Asad Shafiq didn't necessarily get enough power there, because he was falling away as attempting that shot. And Irfan Jailer is in the action again. This game is really in the balance. Asad gone for 9, Karachi 140 for 6. We know Sohail Khan loves batting. He's got good 2 overs to go after this, and 2 deliveries in this over. As I mentioned earlier, he can hit the long ball. 137 games. Last match he scored 34, which was at the National Bank ground. It was the team's highest score. Highest individual score. 34. Sets himself proper. Good ball to a new batter. Amir is not slow. He really gives it a good go, quite rapid. See how Asad Shafiq was falling backwards. His weight wasn't into the shot, and Irfan took the catch. Although that was the short side of the ground, Asad took a calculated risk, but the execution wasn't good enough. Irfan Jailer. Good catch. Great spell. 2 wickets in his 4 overs. His nickname is Jailer, but you can bank on him bowling his 4 overs in T20 cricket. The kind of experience he has. Well, maybe he'll get a nickname of Banker. I think it's because of his economies and everything. He never allows a jailbreak. Over completed. 18 gone. 141 for 6. Good crowd Sunday evening. Weather is absolutely gorgeous. The cricket is fantastic. There's no better place than National Bank Stadium. Only 2 enclosures are allowed to be open, and tonight, very well populated that area. The biggest cheer of the day came when Azam smashed that ball onto the roof of the stadium. That was some sight. Full toss and doesn't connect well. Just a single. Sometimes full tosses are not that easy to put away.
You always talk about could have played it anywhere, especially if it's not a low full toss. If it's at pace, sometimes you just don't get it in the sweet part of the bat. One significant part of this tournament has been Karachi, like we all know, is always famous for that reverse swing. And one ball is used in these 20 overs. So we have seen reverse swing. And that's why those full deliveries, even if you miss your mark by a little bit, low full toss, dipping full toss have been hard to hit. It's a good shot. He's tried to bowl it full and wide, but Umair has done very well to get some cracker of a bat on it. That flew through covers. Change of role for Umair bin Yusuf has allowed him that freedom. Now with only 10 deliveries to go, really went after that, cleared the front leg. Absolutely nailed it off the meat of the bat. Look at that go. Absolutely sizzled across that outfield. Few more of those and that total will look quite big. 170 is well on the card. If Umair can strike like this, 160 will be quite good as well. He's got it over. That's a good hit that from the young man Umair bin Yusuf. And it's all because of good positions and very early into good positions. He opened the onside for himself with that open stance, and that brings up the 150 for Karachi Whites. Correction in line and length by the bowler, but Umair had answer for that. Quickly picked it up, and that made a sweet sound off the middle of the bat. Belligerent bat swing as well. He gave it his all, Umair bin Yusuf. It went flat. He's a typical red ball opener, but you put him in these positions in T20 cricket, he can do that role as well. He's showing his versatility. Wow. He's surely showcasing some talent out here, Umair bin Yusuf. Putting Naveed under serious pressure. 1-4-6-6. Have a look at this for a shot. This is T20 batting at its best. You can call it audacious. He's just showing off. And why not? Look at the position he got himself into. And then he was waiting for the ball to arrive. Just a little flick of the wrist. That is a perfect example of how to play a reverse ramp. You little beauty, Umair bin Yusuf. And that 170 is looking well inside. 8 deliveries to go. That's a good ball. Good comeback by Naveed. 158. Now Asad Shafiq would be feeling a little secure. What a knock, 35 of 21 balls. Have a look at this shot once again, Shah. This tells you what things can be done at that. Oh, what's happening with him? Why are you avoiding the ball? He wasn't wearing a helmet, I guess. It wasn't that fast. Again, clearing that left leg will be safe, but just a single. Over completed. Naveed, 4 overs, 1 for 30. It's 159 for 6.
Oh, that's a close call. Zulfikar Jan feels that's missing. Could be, could be. Worth another look. Umair got himself into a horrible position. He was nowhere near playing that ball. Ooh, and he's been given his runs. So Zulfikar picked up something. Yeah, that's what I was wondering. If his only pad, then leg stump was crashing down on the ground. Suhail Khan wants to do a bit of Umair bin Yusuf. I think he's a strong lad, very strong man. He should go straight. He's got that almighty bat swing, Suhail. He can use it to good effect. He goes down the ground. Or he could just take a single and get Umair on strike. We've seen Suhail Khan for long enough. Do you think he's going to do that? I doubt it. He wants a piece of action himself. Oh yes, oh yes. When it's his bat, it stays hit. He would be a happy man right now. There you go. Suhail Khan, the action man. Big booming bat swing, and it was in the radar. Right in the slot. He saw and his eyes lit up. That's what I said. He's strong man, should look to score in front rather than trying to scoop or battle sweep. There. Once again. Plays it straight. Finds the fielder, just a single. This is now looking like a good score, 167. And it's got into a territory where Lahore Whites would need someone other than Ahmad Shehzad as well to contribute. He's been in stellar form, but not much has come in support. Tayyip Tahir had a good knock in the last game. He would need to come good. 2 deliveries to go. There you go. It's gone miles. And into the stands. Well, not quite, but that was a monster of a hit from Umair bin Yusuf. What a shot. The sound on that. Didn't even have to look where it's going. As a batter, you know you've hit it well, and as a viewer, you can hear the sound and say that's going a long, long way, long way. And it does. Fast bowlers will have to be careful here. Look at that. Down on one knee and launches it into the night sky. We saw Umair play this kind of role in the National T20 Cup final last year. 1 delivery to go. 173 for 6. Yeah, he's been caught by Umar Akmal right down at the rope. But don't take it away because he's done enough damage already. 43 of 24. Umair bin Yusuf goes. And the score after 20 overs is 173 for 6. Well, for a moment we thought that it was going all the way. We didn't think the fielder was back. Umair took on that fielder, but what a great knock this has been from Umair bin Yusuf. He's showing real versatility from being a top order batter to coming in the middle order and being a finisher. No problem here. Umpire would want to check because Umar was very, very close to that boundary skirting. He didn't have to move an inch, and how about that, Sikandar? This is very, very close. Yeah, that looks very close. And he gets the ball. Does that heel touch the rope? It's very tough to say. I think he's looking down. He can tell the umpire what's going on down there. If we just roll it through a little bit, when he caught the ball, you saw his reaction was a little sheepish. If we can roll it further, I don't know, but only he can tell from the pictures we have. Umar Akmal will have the best idea of what happened there. Well, I'd say if you're the fielder and you know you touched the rope, then just say it. Because we don't have a view.
This would be tough on the move. There you go. Ooh. What does the third umpire feel? The TV umpire? Still waiting. And it's been, well, I don't know what it is now. The umpires are walking out. I think he's out because he'd been given out on the field. If there was anything else, then they would have changed that decision. Let's have a look at how Karachi White's batting card looks. Started off with Khurram, 50 of 37, and later 21 apiece from Habibullah Azam. And Azam and Danish got out. They were in a bit of trouble. Then Umair bin Yusuf took the responsibility. 43 of 25, finished well. Sohail Khan, 9 of 5, and they managed 173 for 7. Those figures were dented a little bit towards the end. Ahmed 2 for 38 was good for most part. Irfan was superb, 2 for 15 of his 4, 2 for 28 for Ramiz Jr. He also bowled very well. Naveed, other than that one very expensive over, was pretty tidy, 1 for 30 in his 4 overs. 17 extras, something that the Lahore coach would not want to see. Let's head downstairs and Marina will talk to one of the players. इरफान बहुत ही अच्छा स्पेल और फाइनली विकेट के कॉलम में भी आज आपके नंबर शामिल हुए हैं। उस टाइम पे जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम था इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जब आजम खान की विकेट आपने ली। हिटर्स के खिलाफ क्या हिकमत अमली होती है आपकी? पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, और मेरे जो कप्तान ने मुझे रोल दिया था उसने कहा था कि तुमने आउट करने नहीं जाना, विकेट टू विकेट और कंटेन बॉलिंग करनी है, और उसमें मैं कामयाब रहा हूँ। और आपकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। हमने देखा कि क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, पीछे से पॉपिंग क्रीज के करते रहे। उसमें कंट्रोल और प्रैक्टिस कितनी मैटर करती है? मैं उसमें तो काफ़ी मेहनत करता रहता हूँ, और ना इसमें था कि मेरे जहन में ये था कि दोनों बैट्समैन अब हिट मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और पीछे से विकेट करने से ना वो बॉल थोड़ा सा ना बैट्समैन को ये लगता है मेरे पास तेज़ आ रहा, मगर वो उसको उसकी बैट के साथ कनेक्ट नहीं अच्छा होता। थोड़ा सा सर्फेस के बारे में बताएं, क्योंकि स्पिनर्स आज डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। इसमें यह है कि थोड़ा सा बॉल अगर आप छोड़ के करेंगे तो आपको मार पड़ेगी इस टाइम, मगर थोड़ा सा मार कर करेंगे ना, मगर लेंथ अच्छी होनी चाहिए आपकी, उस हिसाब से फिर आप बचेंगे भी। चलें, ब्रिलियंट बॉलिंग, और उम्मीद करते हैं आगे भी विकेटों में आप नाम अपना लेते रहें। थैंक यू। Expected a lot to do. Ahmad Alam was the first to go, and then the boundary started to flow in the power play. Habib and Khurram Manzoor looked good. Khurram Manzoor took on the spinners. He took Saad Naseem for 26 of 2. He reached his 50, but then young Habib went. Terrific bowling from Ramiz. Azam Khan entertained. This was a monster of a hit. Khurram Manzoor went out scoring 50. Umair bin Yusuf in the middle order really played beautifully. But then Azam's innings come to an end, and Danish Aziz's stay was pretty brief as well. Asad Shafiq, a good boundary, but then he got out. Then came the little blitz from Umair bin Yusuf. Look at that. Sohail Khan, you can't keep him out of action anyway. This one, look at Umar Akmal. He didn't have to move an inch. Found perfectly by Umair on the last ball of the innings. And it will be a challenge for Lahore White's batting lineup. The target is 174. Join us for the run chase in just about 5 minutes. Let's start the game. He's got the toe end of the bat. It's not gone anywhere, and he's out. Big booming sweep के लिए गए और गैप तलाश कर लिया. And this time it's gone.
आजम के हाथ में ये कुव्वत है कि लगता है गेंद अपने घर की जानिब खेल दिए। फील्डर जा रहे हैं इसके नीचे और बड़ी विकेट हासिल कर ली है और एक और विकेट हासिल कर ली। Welcome back once again. Looking at a great start put up by the Karachi Whites batters in the end. And then now a chase is on. It will be a great contest because you've got some in-form batters for Lahore Whites and you've got some good bowling options available in Karachi Whites. Sohail Khan will surely try to make an impact with that new ball and the swing that he has.
And on the other hand, he'll have to counter Ahmed Shahzad, who's in supreme form. Spinners will have a say. Danish Aziz will have a role. Arif Yaqub will have a role, and so will Asad Shafiq, because we've seen fast bowlers have gone for runs through the day and have not really been amongst wickets. Early in the day, Usman Qadir got 5. Iftikhar got quite a few wickets. Today, Irfan Jailer got wickets. So we'll be watching some interesting calls being taken by the fielding captain, how he utilizes the bowling options available. Ahmed Shahzad and Imran Dogar, who played well yesterday, are opening. And then they've got someone like Tayyib Tahir, Umar Akmal in the lineup. And I've got a Lahore Whites keen supporter, fan, and everything else in Ali Yunus. Ali, 174, you take it any day if you were Karachi Whites, and I feel that last 2 overs or 2.5 overs, some extra runs have been leaked by Lahore Whites. They need a good start in the power play. Absolutely, totally agree with you. Imran Dogar played well yesterday, as you said. Impressive strike rate also. And this man, all eyes would be on him. He's the informed man for Lahore Whites. 500s, would you believe it, at this level? 6,760 runs. Lots of experience, lots of talent, lots of commitment this time. But they will be up against this man. We know what he's capable of. The numbers tell you a lot. 168 wickets. Twice he's taken 5 wickets. 5 for 10 his best. This will be a very good contest when Ahmed Shahzad faces Sohail Khan. That's the target, 174 at 8.7. Today, 24 wickets have fallen. 14 have gone to spinners, 10 to fast bowlers. But yeah, you'd say not much of a difference, but the impact has been more from spinners in terms of containing runs and getting crucial wickets. Nice shape in. First ball, Imran's been sent back by Ahmed Shahzad. Good attacking cricket will be required from both sides in the power play. Slip in position. Khurram Manzoor there next to Azam Khan. Deep square and third are the 2 men outside the circle. Yeah, swing early on. And that's what we know about Sohail Khan. He sets the batters up. Be aware of that outswinger too. The slip is there for that. Yeah, again, that ball this time a little bit off the surface as well, coming in, cramping Imran of that room that he was looking for to cut the ball. It definitely will be a huge test for Imran Dogar. He's got talent. He'll have to execute it, and no better place, no better team to play a good inning against. A quality bowling lineup. Sohail Khan, Shahnawaz Dhani is in. They've got good bowling lineup. Ghulam Mudassir in good touch. Yeah, width but no timing in that shot. Ahmed Shahzad has scored most of the runs for Lahore Whites this season. But I have a feeling in this game, somebody like Umar Akmal will have to step up. He did score 49 runs the previous time they played here. But in this big game, against big opponents, they need Umar Akmal's experience and flair and talent. He has the potential, but can he do it? Tayyib Tahir also. They will rely on these 2 middle order batters. Again, a good ball. Again, shaping it in. Lahore Whites yet to get off the mark. The bowls are maiden, then you have to score those runs in 19 overs. Yeah, Sohail Khan can do it. He's a perfect example of when Shoaib Akhtar says a tagda bowler. He has that in him. Well built, sensible also when it comes to bowling. Sets the batters. He's got everything what a new ball bowler should have.
Yeah, width, and he's flashed at it. Circle is on, so he can afford to play that shot. Boundary is what Lahore Whites start their account with. The ball didn't swing this time, and that is why Imran Dogar had that opportunity to go at it. Look at that, no swing whatsoever, kept straight outside the off stump. All hands, the clarity in mind that he wanted to go over the head of the fielder and doing it with some style. This is a Keep the strike. 5 for no loss. Akhlaq, he opened in the last time when Lahore Whites played here. Number 3, number 4, number 5, these 3 batters, they'll have to do lots of runs because Lahore Whites need 160 more runs. It will be a challenge, a huge one. They have the potential. Can they do it? Can they execute it? It won't be easy because they're up against Sohail Khan and his partner Shahnawaz Dhani, the crowd's favourite. He's got a slip in for him. Fielder at deep third and deep square leg. 4 for 5 is best. Dhani. He's got pace. He relies on it. Bowled well in the Quaid-e-Azam Trophy. Yeah, a little late on that shot, Imran Dogar. He wanted it to angle in, but just went nowhere. But if you got that kind of pace, you can beat the ball, or beat the bat, rather. Yeah, he gets hold of it. The quicker it comes, the farthest it goes, because you got pace, can be used against you. And that's exactly what happened. Yeah, that's what Lahore Whites need. Intent. That is pretty clear from Dogar. He's going to go after anything that is in his zone, and that was in his zone. The best part is picking up the length and playing it where it deserved, towards square leg. That this is a long boundary, and he cleared it with some ease. Dogar, this is a good start by him. Needs to carry on. He's gone high in the air. Short fine under it and takes it. Sohail Khan is the catcher, catches it for his partner. And Shahnawaz Dhani strikes. Dogar goes. And he's still staying there because he knows that he's played a bad shot. He's disappointed after hitting a couple of good boundaries. One shot too many from Dogar. He should have realized he's up against some quality bowling. They're not gonna let go quite easy. Look at that. Just got big on him. Although length was there, but that hard length that Dhani hits, Sohail Khan is never dropping those. Dogar, after scoring 11 runs, will have to go back. 11 for 1. Imran Dogar goes out, and as you said that he was on a pause mode, just wondering what happened. The other person in a pause mode was you. I just couldn't believe it because the shot he played previously, I thought it's his day. One shot too many, Sikandar. Not happening. A non-believer. Mohammad Akhlaq usually opens with Ahmed Shehzad, so comes in inside the power play. He hasn't missed out on much. It's just the second over. Shahnawaz Dhani will be quicker. He's just got a wicket. The ball is coming nicely onto the bat, but you got to be sensible when it comes to shot selection. That is what Lahore Whites needs to do. Shot selection has to be perfect because this one
was not a good shot. Should have respected Shahnawaz Dani's bowling. Late in reaction. And Sohail Khan never misses those. He's always in. Likes to be in action. Yeah, hits it hard but finds a fielder. Time and again we've seen Lahore Whites get a very good start courtesy Akhlaq and Shehzad, but then they lose their way halfway through their innings. They got to calculate this chase downs. 174 won't be easy on this surface. We've seen earlier in the day 133 was defended. Yes, bad shot selection from Lahore Blues, but here complete reliance on any one or two batters is not going to be a smart idea. Everyone needs to understand their role in this chase. Yeah, flash at it hard. That's the way to do it. Use or utilize the circle limit to your advantage. End of the over. He gives away 10 in it. It's 15 for 1. I took his time before giving it a boundary. Zulfikar Jan. This is what happens when you give the batter a width on a pitch which skids on. That's exactly what happened outside the off stump. He threw the bat at it. I like the approach. I like the intent. They're going after the bowling. They're taking the challenge. Dogar first and now Akhlaq. Ahmed Shehzad will face for the first time after 2 overs, 15 for 1. This will be a good challenge. In form Ahmed Shehzad against the very experienced Sohail Khan. Yeah, for 12 deliveries he's been at the non-striker and he's lost a partner. Yeah, it's important at this time. Akhlaq, if he's not hitting boundaries, he should look to give the strike to Ahmed, because we know when a batter is in form, he wants to be in the action. You just don't want to be standing on the other end. That bores the opener. So you need to be in action, scoring runs. And Ahmed has been brilliant this season. Oh yeah, that's a good ball. Just leaves that outside edge. Yep, that's Sohail Khan for you. He'll do that to you with the new ball. Look at that. Coming in with angle, leaving the batter after pitching. That's the quality he has. Appreciating it. He knows that he got to give respect to Sohail Khan, because Sohail Khan has that experience behind him, the quality in him. He knows how to get wickets. Off the mark, Ahmed Shehzad with that single. Yeah, that's where Ahmed has been very good in this season. He's valued his wicket. Whenever he thinks he needs to give respect to the bowler, he does. Rotates the strike, goes on to the other end. That's why he's scoring those runs. 4 consecutive 50s already. Didn't play in the last game. Had a niggle. He's back in Lahore Whiteside, and they need it. They need him to do it one more time here at National Bank Stadium. But he will need support from the other end. Somebody like Akhlaq has to go big too. There's good bowling from the two fast bowlers. They've been hit for a boundary each, but they're keeping tight lines, using that new ball, especially Sohail. First over from him, he was shaping the ball in. Then he's bowled one that goes away to Ahmed Shehzad. Yeah, that's what I said. He knows how to set up a batter. He bowled 6 in-swingers to Dogar, and the second ball he bowled to Ahmed Shehzad was an away swinger. But Ahmed Shehzad was smart enough. That's gone. That's gone. Simple and easy for Sohail Khan. That's a big, big wicket
for Karachi Whites and Sohail Khan. Something that I was mentioning, he's too good, he's too clever of a bowler. He knows how to get the batters out. Just a front foot check here, and that's very, very okay. You get a feeling that that stopped on him. He came into that shot early, and then he had to realize that it hasn't reached him. Just stopped on him, and there, the soft dismissal. Sohail Khan gets the big fish, caught and bowled. Ahmed Shahzad is the second wicket to fall for Lahore Whites. And they are now facing a bit of a challenge in this chase. 17 for 2. Tayyib Tahir scored a 50 in the previous game, 67 match-winning inning. Can he repeat that? Won't be easy because Sohail Khan has bowled a beautiful delivery. 9 50s, 134 the strike rate. That's a bad ball to finish the over. It's gone for 4 and Tayyib Tahir off the mark. 21 for 2 after 3. Got a little too excited this time. Sohail Khan going for the glory, wanted to swing the ball from leg side, didn't happen. And it was an easy boundary for Tayyib Tahir. 3 overs gone, 21 for 2. Yeah, I think what happened was that he was angling in, and after pitching, the ball went away from him. Wanted to play towards onside. And a simple and easy catch for Sohail Khan. He's just too good. Too good. 21 for 2. Both the openers back in the dugout. And there's a change in bowling. Ghulam Mudassir will now bowl. He replaces Shahnawaz Dhani. And now Ikhlaq will have to play the role what Ahmed Shahzad used to play for Lahore Whites. He has the potential. Can he do it for a longer period? He will get the support from other end from Tayyib Tahir, but Ghulam Mudassir has had a good season, Qaid-e-Azam Trophy, Pakistan Cup, and now National T20. He's done well in this season. 3 for 6, his best figures, 24 wickets. They shouldn't lose the bigger, larger picture, the plot. That is the chase. Yes, they've lost 2 wickets, 2 important ones, especially the man on your screen. But they've got to keep in mind that the scoreboard has to move on. So if you absorb too many deliveries first up in the power play, then you'll be playing the catching up game. Easier said than done, yes, but you got to do what you got to do. Oh, it was a catch it call, but it was wide of the bowler and his follow through. You were talking about Ahmed Shahzad. Well, he was bound to fail. That happens. You cannot keep on scoring runs in every game. It's about time someone else steps up and plays for the team. Maybe it's Tayyib Tahir's day. Maybe Umar Akmal should do it. Maybe Saad Naseem. They've got the potential. Can they do it? But this partnership
will be the most important one. Wide. But the good part is, Ghulam Mudassir is getting the swing. And that in-swing to the right-handers. Look at that. Maybe look to ball the same delivery from outside the off stump. That will work. From leg side, it's always going away from you, from the right-hander. Try to ball these in-swinger from outside the off stump. You put all the Lahore batters, top 6 of them, under pressure, naming all of them. But you're right about that. See, the thing is that it's a team sport. Yes, one is in form and he might fail on a day. Someone else will have to put his shoes on or get into his shoes and make those runs. And they do have the talent available. Akhlaq can score quick runs. Tayyab Tahir is talented. So is... well, Omar Akmal. Saad Naseem, the captain, can put his hand up. Combined effort will get them closer to that 174 to win. Yeah, length wasn't that bad. I tell you, he's played a good shot. What a shot. Great pickup shot. He picked the length. Superb batting. Wow, picture perfect. Is it Akhlaq's day? I hope it is, because Lahore Whites need him. Can he do it? We also need you, Lex. Cannot afford you to be sitting down. Oh yes, oh yes. Umpire Zulfikar Jan feels otherwise. End of the over. I'm sure we'll see some replays with our next pair of commentators. It is 4 overs gone. Score is a 31 for 2. That has to be pitching outside. Otherwise, it would have been certain. Oh, that was maybe pitching, but I'll let Salman Bhatt comment on that. एक मरतबा फिर देखेंगे इस मानी खेज मोमेंट को, जो कि एक और कामयाबी ला सकता था कराची की खातिर। क्या गेंद पिच हुई है, बॉर्डर लाइन पे ऑलमोस्ट लगती है, और इसके साथ साथ हाइट भी अपना मसला क्रिएट कर सकती थी। ऑफ द बैक फुट खेलने के लिए गए थे, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था गेंद ने, और ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे थे, और जो शफल करके मूव कर रहे थे पॉसिबली उसकी वजह से भी अंपायर का फैसला हक में आया, और इस पे इक्तफा करते हुए मजीद मौके हासिल करने होंगे। उठाकर खेलने के लिए गए हैं, फील्ड गेंद के नीचे आ रहे हैं, और इस मरतबा नहीं बच पाएंगे। अपने दाएं जानिब जाते हुए बेहतरीन कैच मुकम्मल कर लिया। बहुत देर तक हवा में रही थी, जज करना आसान नहीं था, लेकिन अभी कदम जमाने शुरू किए थे अखलाक ने कि आउट। जारहाना बैटिंग करनी पड़नी थी लाहौर को, लेकिन बॉलर्स को पिक करना, बॉल को पिक करना बहुत ज़रूरी था। और जब 3 पेसेस आपके सामने लगे हों जो कि एक्यूरेट हैं, अच्छी पेस से गेंद करते हैं, अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं, तब आसान नहीं होता। आउटसाइड ऑफ टर्म बहुत दूर थी जिसको ऑन साइड पे खेलने चले गए, इसलिए टू एंड ऑफ द बैट लगा और फासला हासिल नहीं कर पाए। अच्छा कैच, वेल जज कैच था ये। एक और झटका लाहौर को, मोहम्मद अखलाक 13 रन बना के वापस 31 पे 3। लाहौर और कराची का मुकाबला है, यहाँ पर धानी को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल पिछले साल हुए थे मरीना, वहाँ पर शाहनवाज अली धानी ने फीचर किया था और चौका ब्लॉक था। चाहे कराची के मैचेस थे या लाहौर के, 7 मैचेस में ऑलमोस्ट हर गेम में
खचाखच भरा क्राउड आया था और वहाँ पे गेंद करने का तजर्बा है। पार्टनरशिप्स ब्रेक की थी शाहनवाज अली धानी ने जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ी थी, और आज भी इन्होंने जो रिहेबिलिटेशन के बाद कराची की टीम को ज्वाइन किया। अदरवाइज हो सकता है कि लड़काना में खेलते, लेकिन चूंकि आके इनको इनके खिलाफ खेलने का मौका मिला और इस मोमेंट को सीज किया अपॉर्चुनिटी की सूरत में। उमर अकमल आने वाले खिलाड़ी जो कि 1.5 दहाई का तजर्बा रखते हैं, और सिचुएशन उनके लिए शायद सुख का सांस लेने की ना हो। वो जो पुराने वाले उमर अकमल थे उसका मजारा पेश करना पड़ेगा। एक तरह से टेलर मेड सिचुएशन इनके लिए ज़रूर है, चैलेंज को पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा रन रेट का डिफरेंस नहीं है। 7.4 की औसत से चल रहे हैं, 9.03 रिक्वायर्ड है, लेकिन सामना अच्छे बॉलर्स के साथ है। धानी की आपने बात की, बड़ा अच्छा सीजन रहा इनका कायदे आज़म ट्रॉफी का, अच्छी लेंथ को हिट करते रहे, अच्छी पेस से, वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस इनको मिला है और उसी को कैरी कर रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। शाहनवाज अली दहानी जो कि लगता है कि रॉन्ग फुटेड हो गए थे इस गेंद को करते करते, और आकर उमर अकमल उनसे खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। वी होप दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। एक रिहेबिलिटेशन के बाद वापस आए हैं शाहनवाज अली दहानी। अब तक अच्छी गेंदें की है। जो उनका खासा है कि गेंद को राइट हैंडर के लिए अंदर की जानिब लेकर आते हैं और वो इस बात से घबराते नहीं है कि शॉट पे डिलीवरी करें, जो कि अब तक उन्होंने विकेट की सूरत में हासिल भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर लगता है कि अपने रनअप में वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, रॉन्ग फुटेड हो गए थे गेंद करते करते, जिसके बाद बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में आए। एक्सपेरिमेंटेशन करने से घबराते नहीं है और शॉर्ट पिच डिलीवरी इनकी कारामद भी इसलिए साबित होती है क्योंकि एक तो वेल डायरेक्टेड होती है, दूसरा पेस इनका साथ देती है। लेकिन हार्ड लेंथ को भी अक्सर हिट करते हुए नजर आए, क्लैरिटी नजर आई है इनकी बॉलिंग में अब। और कुछ बदले बदले से भी दिख रहे हैं जहाँ तक इनके फेशियल लुक्स का और हेयर स्टाइल का सवाल है। गो कि मैं कोई बेहतर आदमी नहीं हूँ हेयर स्टाइल पर कमेंट करने के लिए, लेकिन एक अलग ही उठान नजर आ रही है आज। दूसरी जानिब उमर अकमल को उठाने का मौका मिला है और गेंद निकल जाएगी चौके के लिए। पहली गेंद पर उमर अकमल ने 4 रन लगाकर ऑफ द मार्क हुए हैं, लेकिन बड़ा रिस्की शॉट था, अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए। प्लानिंग सही थी, स्लिप मौजूद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप इनवाइट किया था उमर अकमल को चेस करने में। लकी रहे, खुशकिस्मत बाउंड्री रही, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ओवर पिच थी जिसकी वजह से उतना अच्छा कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये रन्स मैटर ज़रूर करेंगे। एक अच्छी सॉलिड इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, उमर अकमल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये मैच आसान नहीं होने वाला। ऑन साइड पर मुख्तसर बाउंड्री है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं लेग के, और कदमों का इस्तेमाल करके 2 आउट ऑफ 2 करना चाहते थे। आजम शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड थे। शाहनवाज अली दहानी भी राशिद रियाज के साथ आजम की सदा पे मुस्कुराए और अपने पुराने दोस्त उमर अकमल से आकर उन्होंने लगा कि खुद दरियाफ्त किया है कि आप ही बताइए, हम करेंगे या कुछ कहेंगे तो फिर शायद शिकवा शिकायत हो। काफी मरतबा उमर अकमल ऐसे करते हुए नजर आए हैं, फास्ट बॉलर्स को भी चार्ज करते हैं डाउन द ट्रैक, थोड़ा सा अनसेटल करते हैं, रूम क्रिएट करके ऑफ साइड के ऊपर से खेलने जा रहे थे। ज्यादा खुशी इन्होंने दिखाई नहीं और उमर अकमल खुश नहीं थे आजम खान की अपील से। ये स्मार्ट वर्क है उमर का और गुलाम मुदस्सिर जगल करते हुए गेंद को हासिल कर पाएंगे। ये लाहौर की टीम है और स्ट्रॉन्गेस्ट आउटफिट समझी जाती है लाहौर की 2 टीम्स में से, और यहाँ पर उनको ये जो क्रिटिकल पोजीशन है जहाँ पर मिडिल ऑर्डर इनका फ्लॉप हो रहा है, वहाँ पर एक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। अच्छी शॉट अब तक लगा रहे थे अखलाक, लेकिन अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए और बल्ले का स्ट्रॉन्ग एज जरूर लगा, लेकिन बड़ा अच्छा जज किया वहाँ पर। आपने चेंज की बात की थी, शाहनवाज दहानी अपनी नॉर्मल सेलिब्रेशन भी नहीं करते नजर आ रहे। ये थोड़ा बैटिंग कंपैरिजन है जो आपको आइडिया देगा ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर का डिफरेंस, ये बहुत बड़ा फर्क रहा है और मसला भी रहा है लाहौर के लिए। यस, अहमद शहजाद जो कि रेड हॉट फॉर्म में थे, उनके आउट होने के बाद मसाइल यूं भी आन पड़े और उनके मिडिल ऑर्डर ने जब इनके ओपनर्स नहीं परफॉर्म कर पाए तो वहाँ पर लिव अप नहीं किया। और एक ऐसी टीम है जिसके पास अभी भी फेमसली मौजूद हैं इनके कप्तान साद नसीम, उमर अकमल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, तैयब ताहिर जो कि पिछले सीज़न में टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान कप में, और कराची के पिचेस पर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से अपने कदम जमाए थे और ख़ासतौर ऑफ द बैक फुट उन्होंने बड़े दिल के स्ट्रोक खेले थे। इन सब के होते हुए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा लाहौर पे।
विकेट पे चौका, लेकिन उसके बाद खामोशी के साथ हानी का दूसरा ओवर मुकम्मल। 38 पे 3। हिकमत अमली बनानी पड़ेगी लाहौर वाइट्स को, क्योंकि बॉलिंग बहुत तगड़ी है। नॉर्मली ऐसे बॉलर्स हैं नहीं जिन पे आप अटैक कर सकते हैं। ये हमारे अपकमिंग राइजिंग स्टार्स हैं अंडर 19 के, कैप्टन मौजूद हैं साथ बेग। एशिया कप की तैयारी चल रही है इनकी इस स्टेडियम के बाहर ही जो ग्राउंड है वहाँ पे। यस, जल्दी इनकी रवानगी है और एसीसी के इस ऐसे खित्ते में इनको खेलने का मौका मिलेगा जहां पर आपको अंडर 19 के लेवल पे बड़ा टैलेंट दिखता है। चाहे पाकिस्तान की बात हो या फिर इस खित्ते के तमाम ममालिक की, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वहां पर टैलेंट बेशुमार है। अच्छे मुकाबले होने की तवक्को। उमर अकमल ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश करते हुए, अभी बड़ी इनिंग्स बाकी है। गुलाम मुदस्सिर जो कि विड्थ नहीं देते हैं राइट हैंडेड बैटर्स को, उनके खिलाफ आप चार्ज करने के लिए जा रहे हैं तो बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। ये ब्लाइंड अटैक जो है ये कभी भी कारआमद साबित नहीं होगा, स्पेशली जिस तरह के बॉलर्स लगे हुए। गुलाम मुदस्सिर बहुत अच्छी पेस से बॉल करते हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं। शाहनवाज धानी अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र यहाँ पे दिखाना पड़ेगा उमर अकमल को, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप तैयब के साथ क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मोमेंटम वापस हासिल कर सकते हैं। और एक दफ़ा सेट हो गए तो तैयब और उमर अकमल दोनों एक्सीलरेट कर सकते हैं एट विल। लेकिन अब भी जो शैकल्स बने हुए हैं, जो कराची ने प्रेशर डाला हुआ है, थोड़ा सा उसको अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। अपील कर रहे हैं, बेशुमार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन गेंद पॉसिबली लेग स्टंप के और दो आवाज़ों का भी इम्कान लगा था, जिसके बाद उमर अकमल दूसरे एंड पर जाएंगे और शायद वही इस वक्त लाहौर वाइट्स के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑफ द बैट अंपायर ने भी इसको करार दिया है बड़े खतरनाक अंदाज से जी रहे हैं। बिल्कुल भी कदमों का इस्तेमाल नहीं किया। आई एम नॉट श्योर कि क्या शॉट यहाँ खेलना चाह रहे थे, क्योंकि जनरल जो स्विंग है गुलाम मुदस्सिर का वो राइट हैंडर को अंदर ही लाते हैं गेंद। शायद थर्ड की जानिब निकालना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर भी सिंगल डबल्स पे अगर इन्हिसार करेंगे तो शायद थोड़ा सा जो नर्वसनेस है यहाँ दोनों के दरमियान वो कम हो सकती है। तैयब ताहिर जो कि इस अंदाज की पिचेस पे पिछले साल उन्होंने बेशुमार रन्स बनाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के कैंप को भी उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन अब तक वो उस इंटरनेशनल लेवल पे उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके। कराची किंग्स की टीम ने भी इनको शामिल किया था मरीना, जहां पर कराची ने अपने आखिरी मुकाबले में PSL के जो कि इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया वहां पर इनको मौका दिया था और अपने फर्स्ट गेम में वहां पर इन्होंने 50 भी बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स की वो परवाज उस अंदाज से जारी न रह सकी और उसके साथ ये भी उस मोमेंट को ग्रैब ना कर सके। बड़ी मुश्किल से गैप निकाला है और लगता है कि बाउंड्री भी तलाश कर ली है। ये तैयब ताहिर का खासा है, जहां पर गैप दिखता नहीं है वह तैयब की आंखें उसको तलाश कर लेती हैं। खूबसूरत चौका। थोड़ा सा चूक गए थे, लेंथ में काफी फुलर था और खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके ये प्लेसमेंट इन्होंने पिक की। थोड़ा सा खुशकिस्मत जरूर है कि फील्डर के पास नहीं गया, लेकिन 4 रन काफी मानी रखेंगे। मुदस्सिर नॉर्मली अच्छी हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, इस मरतबा शायद यॉर्कर की तलाश में थे, लेकिन इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना पड़ेगा लाहौर को। पावर प्ले का इख्तिताम होने जा रहा है। लाहौर वाइट्स की गो के 3 सरकर्दा विकेट्स गिरी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को इस तलाश में समझेगा जब तक मौजूद रहेंगे उमर अकमल। गो के अब तक उन्होंने 49 रन की एक टॉप इनिंग्स खेल रखी है और वो अपने उन कलर्स में नहीं है जो कि उनके लिए मुतकाजी है, जिस लाहौर की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये चूंकि मिडिल ऑर्डर में कोलैप्सेस हैं, इस वजह से शायद इनके कैंप को भी क्वेश्चन का मौका देगा कि अगर यहाँ पर सेटिंग नहीं चल पा रही है तो आने वाले मैचेस में शायद कोई तब्दीली हो। और बड़ी मुश्किल से गेंद तक पहुंचे, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के साथ इसको निकाल दिया चौके के लिए। तैयब ताहिर का एक और चौका पावर प्ले मुकम्मल करने के लिए। फिर धड़क रहा है लाहौर 47 पे 3। यहाँ पे गलती मुदस्सिर ने की।
आउटसाइड ऑफ टर्म बहुत बाहर था और बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किया। ओवरहिट करने नहीं गए, सिर्फ रूम और पेस का फ़ायदा उठाया तैयब ताहिर ने। ये दोनों में ये सलाहियत मौजूद है कि एक्सलरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किस बॉलर को टारगेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी इन दोनों को। अगर ये दोनों कामयाब होते हैं पार्टनरशिप यहाँ बनाने में तो फ़ायदा हो सकता है लाहौर को। तो मरीना, अगर सेमीफाइनल में ये मुकाबला आन पड़े तो अलग बात है, लेकिन कम से कम सुपर एट्स की स्टेज में लाहौर कराची की आखिरी मरतबा राइवलरी है, जहां पर पावर प्ले का सवाल है। वहां पर विकेट कम गिरी थी कराची की और रन्स भी उन्होंने कम बनाए थे। लाहौर रन्स के शुमार में कुछ आगे, लेकिन उन्होंने अपने 3 सरकर्दा खिलाड़ियों को गंवा दिया और अब लेग स्पिन के जादू के चलने का वक्त आया चाहता है। चाहे उस्मान कादिर हों या रमीज़ जूनियर, दोनों ने अपनी शानदार बॉलिंग के साथ मुतासिर किया और अब ये मोमेंट है कि आरिफ अपने इस फ्लाइट के साथ बैट्समैन को रिसीव करने के लिए जा सकें और देखें कि इस राइवलरी में किसका पलड़ा भारी रहता है। इससे पहले कराची अपने मुकाबले को हारा था, लेकिन उसने अपना बदला हासिल किया लाहौर ब्लूज के खिलाफ एक शाम पहले। अच्छा सिंगल है ये, प्रेशर डालना पड़ेगा। जो इनर रिंग के फील्डर्स हैं उन पे स्ट्राइक रोटेशन बहुत मैटर करेगी, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ। हमने देखा कि आज के दिन में पलड़ा भारी रहा स्पिनर्स का। उस्मान कादिर ने आज 5 विकेटें हासिल की, मोहम्मद इरफान ने बहुत ही क्रूशल टाइम पे आके अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और अब यहाँ पे आरिफ के पास मौका है। उनके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इस सर्फिस को कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे ये देखना पड़ेगा। ये तैयब का खास है, ऑफ द बैक फुट वो गैप तलाश करते हैं और अब पावर प्ले के खात्मे के बाद जहाँ पर उन्हें रन रेट हासिल कर लिया, ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर से कुछ कम की, वो इस पर बिल्ड कर सकते हैं और आने वाले चंद ओवर तक खास तौर पर आरिफ जो कि अपना पहला ओवर करें उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। हवा देने से ये चूकते नहीं हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी ड्रिफ्ट से भी मुतासिर किया अब तक। लाहौर जिंदा दिलों का शहर, मुकाबला रोशनियों का शहर कराची से। हम फूड की बात करते हैं तो फेमसली बिरयानी का पुलाव से, हम पानी की बात करते हैं तो समुंदर का दरिया से। तो देखते हैं कि इसमें आज पलड़ा किसका भारी रहता है, क्योंकि दोनों मुकाबले में से एक कराची और एक लाहौर की दूसरी टीम जीत पाई है। हवा में खेले और बहुत करीब थे, गिरते पड़ते रमीज अजीज इस कैच को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन 2 मरतबा कलाबाजी जरूर खाई, गेंद हाथों से निकल गई। एग्जैजरेट स्पिन हमें देखने को मिला और तैयब बहुत ज़्यादा फॉलो कर गए थे इसको, खुद भी दूर हो गए थे और उसके बाद फिर भी ऑप्ट किया ये शॉट खेलने के लिए जो कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। अगर ये कैच ले लेते रमीज तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच होना था और एक बड़ा झटका लग सकता था तैयब ताहिर की सूरत में। गो के अभी भी वो मौका हासिल कर सकते हैं, लेकिन आरिफ के हौसले बुलंद हो जाते हैं जिनका ये टूर्नामेंट शानदार गुजरा है। पहले ओवर में तैयब ताहिर जैसे बैट्समैन की जिन पर अब रिलाई कर लाहौर, उनके शायद उम्र की विकेट मैटर ऑफ टाइम हो, वो बड़े ख़तरनाक अंदाज से अब तक अपना वक्त गुजारे हैं, तलवार के साए में जैसे जी रहे हों इन रन्स को निकालने के लिए। कदमों का इस्तेमाल शायद आए चाहता हो। रॉन्ग वन की, अच्छा रीड किया उमर ने। ये वो चांस था जो क्रिएट किया था, खुद भी थोड़ा लेग स्टंप की साइड पे उतर गए थे और उसके बाद स्पिन की वजह से बॉल और दूर हो गया, पुल आउट नहीं किया, लेकिन अच्छी कोशिश थी। लेकिन इस तरह के हाफ चांसेस को आपको क्रिएट करना पड़ता है बड़े मैचेस में। एक मरतबा शायद एक्स्ट्रा कलाबाजी भी खाई उन्होंने, क्योंकि अगर आपके हाथ से कैच गिर जाए तो आप कभी उंगलियों को गौर से देखते हैं, बैट से एज निकले तो बैट के किनारे को कोसना शुरू करते हैं, लेकिन इस अंदाज का कैच हो तो फिर आप शायद अपनी पोजीशन को भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उससे कुछ गलती हुई। कोशिश बहरहाल बड़ी अच्छी थी और अब दोनों एंड से स्पिन बॉलिंग का वक्त हुआ चाहता है। उमर अकमल अपने जोबन पे बड़ा अच्छा खेलते थे, लाइट ऑन स्पीड थे स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए, और जो लॉफ्टी शॉट्स इनके चाहे मिड विकेट की जाने में या फिर इनसाइड आउट, वो सब उनको लगाने की सलाहियत है। वहीं पे खेलना पड़ेगा अगर उनकी बैटिंग आती है इस ओवर में, क्योंकि मुख्तसर बाउंड्री है। और वो जो इब्तिदा में उमर अकमल का खासा हुआ करते थे पावरफुल शॉट, जो कि आजकल के दौर में शायद आजम और उस अंदाज के दीगर बैट्समैन लगाते हैं, वो अब उतने नहीं है, तो अपने गैप के लिए जरा स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उमर को।
और अभी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है स्मार्ट क्रिकेट की। निकले और बहुत ही बाहर निकल गए, कश्तियां जला दी थी पीछे। उमर अकमल तलवार के साए में जी रहे थे, जो कि आकर इनकी विकेट की सूरत में गिर गई। दानिश अजीज ने प्राइस विकेट हासिल कर ली उमर की। स्मार्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही केयरलेस शॉट था, बहुत प्रीमेडिटेटेड शॉट था। दानिश ने जल्दी रीड कर लिया था कि कदमों का इस्तेमाल करेंगे। उमर अकमल लाइन भी नहीं कवर की थी उन्होंने, और एक प्रीमेडिटेटेड शॉट खेला और बहुत ही बड़ा नुकसान उमर अकमल की सूरत में लाहौर को फेस करना पड़ा। मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दानिश काफ़ी नफीतुली बॉलिंग करते हैं। फ्रंट लाइन का कोई खतरा यहाँ मोल नहीं लेते। लेकिन दूसरी जानिब जिस चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि उमर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बहुत ही कैजुअल शॉट थी, दूर हो गए थे, कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था लेकिन लाइन मिस कर गए। और बहुत ही आसान स्टंपिंग आजम खान की जानिब से, जो काफ़ी वोकल हैं ग्लव्स पहन के, और इनका वापस 9 रन बना के डगआउट में 52 पे 4। साद नसीम लाहौर वाइट्स के कप्तान, जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है कराची में। इब्तिदा में वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट भी लगते थे मिडल ऑर्डर की बैटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद से उनको भी अपने आप को दरियाफ्त करने के लिए आना पड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 99 मैचेस मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि अब तक के इनके इस करियर की लॉन्जेविटी का मुंह बोलता सबूत। 4 50s मुकम्मल किए हैं। स्ट्राइक रेट शायद उस हिसाब से नहीं है जो कि T20 क्रिकेट में दरकार है। और अब साथ निभाना पड़ेगा तैयब ताहिर का। दानिश अजीज ने दूसरी जानिब स्मार्ट वर्क का मुजाहरा किया, इनको पटखा आगे आ गए थे खेलने के लिए, यूं वापस जाना पड़ा है। और अब हौसले बुलंद कराची वाइट्स के स्लिप लेने का फैसला कर लिया। आजम फॉर यू, टीम को उठा के रखा हुआ है और कराची को जगा के रखा हुआ है, और लाहौर के बैटर्स को डरा के रखा हुआ है। काफी वोकल है और ये खासियत होती है कीपर्स की, एंजॉय करते हैं अपना ग्लव वर्क। अच्छी डिलीवरी थी ये तो आजम है जो कि जिनके साहबजादे हैं, वो तो कम ऑन सकी एक ब्रांड बन गया था जब सकलैन को वो पीछे से बकअप करते थे और एक कामयाबी की जमानत होता था ये। लेकिन ये थे दानिश अजीज जो कि गेंद को खेलने के लिए उमर अकमल बहुत आगे निकल गए थे। थोड़ा टाइम बाय करना पड़ेगा यहाँ पे लाहौर वाइट्स को। विकेटों का भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन तैयब और साथ नसीम थोड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं। रन रेट का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑल आउट जाएंगे तो शायद बिल्कुल भी करीब ना पहुँच सकें अपने टारगेट के। थोड़ा सा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। दानिश अजीज का बेहतरीन ओवर, सिर्फ 3 रन दिए और उमर की विकेट भी हासिल की। 54 पे 4। It's 54 for 4 and we are in the 9th over. And Tayyib Tahir tries to go big and in the process just outside edging the ball, and it goes to the boundary at third.
And the short third fielder Danish could only give a chase to see that the ball crossed the rope. So Lahore get an important boundary, but they've already lost 4 wickets, and all the main men, especially Ahmed Shahzad, the man in form. For the first time in the day, we've seen the fast bowlers have done the initial damage. We were talking about it before this innings started. 14 wickets today went to spinners. And now, since they're already 4 down and in a spot of bother, Arif Yaqub is not going to make it any easier for them. Spoke about Peshawar when you were saying the match ended, that seems like all the players have understood their roles, individual roles. That case seems to be missing in Lahore White, especially when they come out with the bat. Heavily relying on 1 or 2 individuals is not helping their cause. They do have the names, the reputations, all the way to number 6, where the captain comes. But it's just too much is being expected in the power play from an opener. And also I feel it's high in the air, should be out. And very well done by Ahmad. That's very well done. That's good game awareness, knew where the boundary line was, and on the second attempt has managed to dismiss the captain. We might have a second look, but it looks very, very clean from the naked eye. Yes, tremendous take that. A great piece of display, great presence of mind from Ahmad Alam, and credit to the bowler as well, who flighted the delivery and asked Saad Naseem to go big if he can. And he obliged. We shall see what the third umpire thinks, because he is being consulted. There we go. Here we start with the replay. And young Ahmad Alam is coming under the ball. And there he tries to balance himself. And I think that's fine. Maybe we need to see another angle. But good take. Both feet in the air as he takes that. And then as he lands, he feels that the balance isn't there. And this is where he starts to realize that. And then after this step is where actually the decision will come, and great presence of mind. Yes, he has released the ball, and it's a wonderful take. Yeah, when he caught the ball, he felt that he's losing balance, will tip over, so he releases the ball just in time, enough to get back inside the playing zone and recatch it. Eagerly waiting for the official call. There's the Karachi dugout. That's the man in trouble, and he's out. They lose another one. The captain this time. 5 gone for 59 inside 9 overs. Yes, Lahore lose their captain, and this may have been the last recognized pair, and he's gone for 1, and has left them tottering at 59 for 5 in 9 overs. The new man in is Mani Wasev. He's a youngster. He plays for the Center of Excellence in DHA Phase 5, and he has also played for the Pakistan under-19s. And
definitely somebody who can bat and has the ability, but hasn't put up a show at this level so far. And this is a great opportunity for him. 11 overs to go. Tayyib Tahir is on crease. And if he can stick around and put up a good partnership, who knows? But still, I believe that this is a tall ask. And Karachi bowlers are on top. Top 4 teams qualify for the semis. Lahore Vice is at number 6. Even if they lose this one, they will remain at 6. But yes, they'll take a huge dent on their net run rate if they lose with the margin. Key in that wicket was the flight, which enticed the batter Saad Naseem to go after the ball, and then the rest, it was all Ahmad Alam. Done a great job, and he is pumped up after that catch. घुस जा उसके अंदर, घुस जा, गिरा दे अगली दफा. 17 wickets have fallen to spinners today up till now in the 2 matches and this one going on, compared to 12 that have gone to fast bowlers. But you'd probably say the 17 wickets have been more impactful because the spinners have been more impactful in terms of keeping tight lines, not giving too many runs, and changing the course of them. The wickets that have fallen to spinners have been key wickets. Azam Khan is enjoying. He's having a few things to say behind the stumps, and he's a very chirpy character, and he just keeps on enjoying the work with the gloves and has a bit to say. Catch it! And this is another wicket, and Munib Asif's terrible record with the bat continues, and it's number 6 down now, and Danish Aziz since last game has struck that wicket-taking form, and one more to his tally. It's 62 for 6, and Lahore Whites in further trouble. Yeah, the second cotton ball in this innings. First Emma Shehzad and now Munib. He's pushed hard, bottom hand, and easy catch. Another soft dismissal. And they're just falling like dominoes now. 6th wicket goes with the score of 62 on the scoreboard. And Munib Asif goes for 1. And now it's time for the jailer to arrive. Irfan. He's the new man in, and he is capable with the bat. And far more experienced than what Munib was. Scored 100 in the first-class cricket, and many other innings where he's been very useful with the bat. And today he will require to bring all his experience into play if they have to put up a decent show even. One thing's for sure, he doesn't listen to his captain. He gave an interview saying, my captain said, don't go for wickets. Just try to contain. He took 2 wickets for 15 in his 4 overs. He said, don't go, but he didn't say don't take any wickets. Oh, that's a nice shot first up. That's the over. Halfway now. 62 for 6 Lahore.
This is the sorry story of Lahore batters. The first one goes down trying to pull a quick one from Dhani and gets no timing on it. And then Sohail Khan takes an easy, soft dismissal of Ahmed Shahzad. And once again trying to pull another batter. Bites the dust. Only caught easily. And then Umar Akmal, very disappointing. He was out of his blocks a day before the ball had arrived. And this one was a great take from Ahmad Alam. So Umar Akmal, with wickets falling around him, as a senior player, he needed to be there. But that was careless is a small word for what sort of a shot he opted for. Hasn't got hold of it, but he's played it wide of long off. Dhani is the man, and well, Habibullah rather. And he's not been able to cut that off. You'd say probably Tayyab had good placement. Well, I thought we'll have a look at the replay again, and I thought he wanted to play it somewhere else, but he did not middle it. In fact, an edge, what you call an educated edge, went in the gap and went to the boundary. So lucky for Tayyab. But yes, they have to hit boundaries every over. And it's spinning. Now Arif, with his experience at the grassroots level, and he will not succumb to any sort of pressure. He will give it the air because he knows that there is turn available. Look at Azam, where he went to take that ball. And where do you go from here? If you're in Tayyab Tahir's place, you're running out of partners, you're not down to the bowlers now, and you, of course, need 106 runs of the remaining 56. well, as far as I'm concerned, I go back to the hotel. But Tayyab Arif, he obviously he needs to take it till the end, till the last few overs. He needs to stay there. Or you could convince Tayyab to do what you're doing. Go back to the hotel. That's going to happen anyway. But there are a few who will be walking to the hotel in this lineup. Because there's been some really very casual shots that have been attempted. That's good placement again. Tayyab is a proper bat. He understands how to place and find the gaps. 11 gone, 72 for 6, 10 of the over. Tapal tea moment. If you're a supporter of Karachi Whites, you'll be enjoying this cup of tea. Even if you're not, you'll enjoy it. The weather is good. And a hot cup of tea is always a pleasure to have. Irfan's yet to get off the mark. Attempted the first ball he faced as a reverse. Yes, this one just a touch shot, and Tayyab Tahir was quick to pounce onto the back foot and place it between mid-wicket and mid-on. A good shot, and they need to get boundaries every over and then keep the strike rotating. High in the air, and he's cleared it. Irfan starts his account with a maximum. Yes, that was in his range. He's got long levers, full extension of the arms, and sending the ball comfortably over the head of the fielders for 6. And if they can start to build up some momentum and be sensible while doing so, at least they can avoid the poor net run rate.
Karachi Whites lost their game yesterday. Oh, missed by Azam Khan. Well, tough chance, yes, you could say, but he was trying to use his leg to stop that ball eventually. Yes, a lot of premeditation there from Tayyab Tahir. He was out of the blocks even before the bowler had released the ball. And this at the moment isn't good. They have already got 7 of the first 2 balls. So even if they take a single every ball, they still have the run rate. And they need to be there. Once again, the long handle. Once again, runs for Irfan Jela. That's a boundary on that occasion. So he moves to 11. Will take some pressure off Tayyab Tahir. Yes, and that's what the doctor ordered, for Tayyab Tahir to have a breather. And Irfan taking the long handle. And they got 10 of the last over, and now they already have 12 with 1 ball to go. So sense needs to prevail. There's method to madness, even in this kind of chase. Trying to be cheeky to play it very far into third. 12 overs gone. It's 84 for 6. रावी किनारे रहने वालों को यह आखिरी मौका है इरफान की इस बैटिंग की सूरत में। तैयब ताहिर ने अपने कदम जमाए हुए हैं, लेकिन मैच को लाइव रखा हुआ है। 48 गेंदों पर 90 रन। कराची से पिछले मुकाबले में भी लाहौर ब्लूज़ के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल करते करते मार्जिन कम कर गया था और आखिर में 2-4 हाथ लबे बाम रह गया था। लाहौर वाइट्स क्या उस अंदाज की कारकर्दगी दिखा सकता है। अभी वो वक्त शायद शाह फैसल नहीं आया है जिसमें अपने नेट रन रेट की फिक्र करने की जानिब पे जाएं। एक फतह हासिल कर चुके हैं, एक शिकस्त है, और अभी अच्छी बात ये लग रही है कि कम से कम पूरी कोशिश कर रहे हैं फड़फड़ाने की। बिल्कुल कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तैयब ताहिर फाइटिंग क्रिकेटर हैं, मोहम्मद इरफान काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छी नो हाउ रखते हैं। बॉलिंग भी आज बहुत शानदार की। और यहाँ जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि जो शॉप विंडो है वो खुली हुई है PSL के लिए। प्लेयर्स के पास स्टेज है, आप परफॉर्म करें और अपना नाम उस हैट में डालें और फिर उम्मीद करें कि आप पिक हो जाएं। तो मैदान सामने है, यहीं कुछ करेंगे तो आपका नाम होगा और ये अच्छा मौका है। बॉलिंग गुलाम मुदस्सिर ने बैंग हिट किया टारगेट को। खेलना चाहते थे इम्प्रोवाइज करते हुए तैयब ताहिर, लेकिन तीनों स्टंप्स एक्सपोज कर बैठे। शानदार शुरुआत की है स्पेल की गुलाम मुदस्सिर ने। अच्छी बॉलिंग की, नई बॉल से भी गुलाम मुदस्सिर ने बहुत ज़बरदस्त शेप हासिल कर रहे थे। इस स्टेज पर वेरिएशंस की ज़रूरत को महसूस किया। यहाँ पे कोई मसला नहीं है। स्लो डिलीवरी थी, पेस नहीं थी बिल्कुल भी। तैयब ताहिर चूक गए। फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर था, लेकिन पेस ऑन डिलीवरी पे ये शॉट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता। तैयब यही सोचते हुए जा रहे होंगे वापस। मुज़ाहमत अच्छी की उन्होंने, लेकिन शायद वक्त के हिसाब से काफ़ी नहीं थी। 36 रन बनाकर आउट हुए लाहौर वाइट्स 84 पर 7। मोहम्मद नवीद हैं आने वाले बैटर जिन्होंने रिप्लेस किया तैयब ताहिर को, जो कि शायद उम्मीद की आखिरी किरण भी साथ ले गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जेलर ने लगा है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको अपनी जगह पर खड़े रहने की तलकीन की है। गुलाम मुदस्सिर ने ये बड़ी शानदार विकेट हासिल की है। मुसलसल अपने आदत के मुताबिक कमिट करते हैं, खींच के गेंद करने के लिए वट नहीं देते हैं स्टम्प्स की लाइन में, और इस मरतबा बिल्कुल स्टम्प्स पे हिट कर रही थी गेंद। पहली गेंद पर तैयब ताहिर ने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की। हवा में गेंद गई, एक और आउट होने का खदशा, और
अपने बाएं जाने भागते हो। उमैर बिन यूसुफ ने इस बेहतरीन कैच को हासिल कर लिया। गुलाम मुदस्सिर का ये मोमेंट है ऑन हैट्रिक, कराची ऑन द टॉप। पल के पल सिचुएशन चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था कि लाहौर की इनिंग्स को कोई मोमेंटम मिला, पार्टनरशिप हुई तैयब और इरफान के दरमियान, लेकिन अब पहले तैयब गए और अब नवीद। लाजवाब कैच था ये उमैर बिन यूसुफ का, जिन्होंने बैटिंग में भी बहुत शानदार कारनामा दिखाया। गुलाम मुदस्सिर एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं उनकी ग्रिप, चेंज ऑफ पेस, सरप्राइज किया नवीद को, जल्दी खेल गए ये शॉट और उमैर ने अच्छी ग्राउंड को कवर किया और एक अच्छा कैच भी थामने में कामयाब हुए। हैट्रिक पर होंगे गुलाम मुदस्सिर। नवीद की वापसी हुई बगैर स्कोरर्स को जहमत दिए हुए। 84 पर 8 लाहौर वाइट्स। रमीज जूनियर बैटिंग के लिए आ रहे हैं इस मैजिकल मोमेंट में जब गुलाम मुदस्सिर ने बैक टू बैक विकेट्स हासिल किए हैं। इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हासिल करने के करीब, इससे पहले भी जमान ऑन हैट्रिक हुए थे इसी ग्राउंड पर कल, लेकिन वो मुकम्मल ना कर पाए थे कारनामा, और आज मौका मिलेगा शायद उनको स्टंप्स पे हिट करने का। LBW या कैच क्या कर पाएंगे स्लिप लेने का फैसला के लिए। एक ही स्लिप है, मजाका नहीं है कि मजीद दबाव डालें रमीज जूनियर पे अटैक करने के लिए। राउंड द विकेट आ रहे हैं राइट हैंडर को। गुलाम मुदस्सिर ऑन हैट्रिक। आइडिया शायद था स्टंप्स की लाइन में आने का, लेकिन वाइट तो अभी भी बरकरार। थोड़ा सा ऐसा लगा, कंफ्यूज हो गए माइंड में कि क्या करना चाहते हैं, इन स्विंगिंग यॉर्कर या वाइड ऑफ द क्रीज आकर आउट स्विंग कराएं और विकेटों को हिट करें। चूक गए, लेकिन दूसरा चांस मिला है उन्हें, हैट्रिक चांस, क्योंकि ये लीगल डिलीवरी नहीं थी। थोड़ा सा विकेटों के करीब आके टिपिकल वो जो वसीम अकरम वाली लाइन हासिल करने की कोशिश करेंगे, एंगलिंग इन एंड लीविंग द राइट हैंडर। जो गलती पिछली मरतबा करने के लिए गए थे रमीज जूनियर ने इस मरतबा नहीं की, और राशिद रियाज ने कंफर्म किया है कि हैट्रिक का चांस अभी भी बरकरार है, क्योंकि गेंद उनके ख्याल के मुताबिक बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप से। एंटी क्लाइमेक्स, लेकिन लगता ये है कि वो मैच निकलवाना चाहते हैं, जैसे आपने बड़ा अप्रोप्रिएटली मेंशन किया कि वसीम मैच निकालते थे और जाती थी सीधे स्लिप के हाथों। और अब हिकमत अमली तब्दील कर ली है, ओवर द विकेट आ गए हैं। हैट्रिक का मौका अभी भी कायम है। अच्छी गेंद, लेकिन छोड़ते हुए चले गए बैटर को। फाइनली ये वो डिलीवरी थी शायद जो हासिल करना चाहते थे, लेकिन जो टिपिकल डिलीवरी गुलाम मुदस्सिर की स्टंप्स की लाइन में आती है, उसके बरक्स उन्होंने इनवाइट किया बैट्समैन को कि वो स्ट्रोक खेलने के लिए जाएं। रमीज जूनियर ने चेस भी किया था, लेकिन इससे कता नजर लाहौर वाइट्स के लिए अब बज़ाहिर फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई हैं इस गेम में। लाहौर वाइट्स को बड़े क्विक टर्न अराउंड करना पड़ेगा। कल यहीं पे इनका मुकाबला है फाटा से, एक फतह इनको इससे पहले मिल चुकी है। और फिर छोड़ती हुई चली गई राइट हैंडेड रमीज को, जो अभी तक गेंद को बल्ला लगाने में कामयाब नहीं हुए। मैंने कहा इस ओवर से पहले गेम में फाइट जारी थी, लेकिन इस ओवर के आगाज में ही गुलाम मुदस्सिर ने इस गेम को एज अ कॉन्टेस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तैयब ताहिर पहले आउट हुए, उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, लेकिन स्लो डिलीवरी को जांच नहीं सके, और फिर नवीद से तो कुछ तवक्को करना फजूल था। लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं, जब इनके टॉप ऑर्डर बिखर गए तो लोअर ऑर्डर बैटर्स से तवक्को नहीं कर सकते। तैयब ताहिर अलबत्ता अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। गुलाम मुदस्सिर ने इस स्पेल में आते ही धाक बैठा दी, स्टंप्स की लाइन को हिट किया, चेंज ऑफ पेस किया जो कि तैयब ताहिर निकालना चाहते थे। फाइन लेके जाने और उससे अगली गेंद पर उन्होंने आने वाले बैट्समैन नवीद को आउट कर दिया। अच्छा कैच लिया, डिप कर रही थी गेंद उमैर बिन यूसुफ के बाएं जाने, लेकिन उन्होंने निकलने का मौका नहीं दिया।
ये वो वक्त आ चुका है शायद शाह फैसल के आप पोस्टमार्टम करने की आप शुरुआत करें, कम से कम इस मैच के हवाले से लाहौर वाइट्स के लिए, जहां पर उन्होंने दरमियान में अच्छी बॉलिंग की, वहां शायद आखिरी ओवर्स में कुछ ज्यादा रन्स लीक कर दिए। 3 ओवर्स में 42 रन दिए थे। यहाँ पर अपना मैजिकल ओवर मुकम्मल किया गुलाम मुदस्सिर ने, और तरोताजगी चाहिए दूसरी जानिब आने वाले मैच के लिए, और टपाल टी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज तो सिंधी कल्चरल डे भी है शाह फैसल, पोस्टर बॉय हैं सिंध के लड़काने से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज अली दहानी, उनके फेवरेट, इनकी आंखों के सामने खेल भी रहे होंगे। अच्छा मौका है सब कुछ एंजॉय करने। जी आप अजरक भी इंजॉय करें, टपाल चाय भी इंजॉय करें, मौसम भी इंजॉय करें, क्रिकेट भी इंजॉय करें, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। और अच्छा लगा शाहनवाज धानी को वापस फील्ड पर देखकर। पहली विकेट भी उन्होंने हासिल की, डोगर को उन्होंने चलता किया, और एक वाज़े डिवाइड नजर आती जा रही है 3 मैचों के बाद। जो 8 टीमें नजर आई हैं सामने, पाटा और लाहौर ब्लूज तीनों मैच हार चुकी हैं। लाहौर वाइट्स दूसरा मैच तकरीबन हार चली है यहाँ पर, जबकि पेशावर, रावलपिंडी और कराची वाइट्स ऐसी 3 टीमें लग रही हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउटफिट हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं उनके पास। शायद वक्तान पहुंचा है कराची कप्तान असद शफीक के लिए कि वो जाएं गो फॉर द किल, लेकिन बाउंसर के साथ इनवाइट किया इस स्ट्रोक के लिए। इरफान सरप्राइज हो गए, उन्हें तवक्को नहीं थी शायद कि सोहेल खान बाउंसर करेंगे, काफी ऊंचा था। फौरन मुड़ के देखा उन्होंने स्क्वेयर अंपायर की जानिब, काफी ऊंचा था, लेकिन अंपायर ने फैसला बॉलर के हक में दिया। स्लो वन डाउन द लेग साइड, और ये ओवर लंबे जरूर जाएंगे लेकिन शायद मैच के नतीजे पे असरअंदाज ना हो सकें। जो लाहौर ने किया सो किया, लेकिन कराची ने जो बेहतर किया वो आज देखने से रखता था। इस टूर्नामेंट में अब तक मिडिल ओवर्स में इनकी कारकर्दगी काबिल जिक्र नहीं थी, जहां पर वो सिर्फ 3 विकेट्स हासिल कर पाए थे 188 रन देकर। डेथ ओवर्स में अलबत्ता वो आते थे फॉर्म में, जो कि आखिरी 4 ओवर शुमार किए जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने 5 विकेट्स हासिल किए हैं शाह फैसल, जो कि उनके कम बैक करने का सबूत है। और ठीक वक्त पे शायद इनकी बॉलिंग ने लिफ्ट किया है, ये दहानी के आने से हुआ, और फेमसली जो अब तक आरिफ याकूब बॉलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से मुमकिन हो सका। तो चीज़ें ठीक जगह पे बैठती जा रही हैं कराची के लिए। जी बिल्कुल, और जब आपके पास एक ऐसा रिस्ट स्पिनर हो जैसे कि आरिफ याकूब हैं, तो मिडिल ओवर्स में आपके पास चांस रहता है विकेट लेने का। और हमने जो इसमें इकोनॉमी रेट देखा वो भी 7 से नीचे का था मिडिल ओवर्स में, तो वो आज बेहतर हो गया होगा, क्योंकि आज विकेटें ज़्यादा आई, रन्स कम बने उस फेज़ में, और ये अच्छी साइन है। पिछले 2 मैचों में दानिश अजीज़ भी अच्छी बॉलिंग फॉर्म में आ गए हैं। तो कराची के जो पजल के जो हिस्से हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठते जा रहे हैं। 3 राउंड हो गए हैं इस सुपर 8 के, 7 मैचेस खेलने हैं हर टीम ने। यस, और जो बैलेंस इनको चाहिए था, और ख़ासतौर पर सुहेल के बल्ले ने जो रन उगले हैं उसकी वजह से एडिड प्रेशर आया, गो के जो मार्जिन ऑफ डिफीट है बहुत बड़ा होगा, लेकिन बड़ा टर्न अराउंड करना पड़ेगा, ना सिर्फ अपने रिजल्ट्स के लिहाज से बल्कि लाहौर वाइट्स को अपने आप को वापस लाने के लिहाज से। यहीं पे आएंगे वो अगला मैच खेलने के लिए अब आने वाले 18 घंटों में, जब वो अब तक का कोई ना मैच जीत पाने वाली फाटा से मुकाबला करेंगे, और उसके बाद और लाहौर शो होगा। लाहौर ब्लूज रावलपिंडी की स्टार स्टडीड टीम का मुकाबला करेगी। लाहौर ब्लूज सारे हारे, पिंडी सारे जीता है शाह फैसल। जी बिल्कुल, पिंडी और पेशावर 2 वाहिद टीमें जिन्होंने सुपर 8 में तीनों मैच अब तक जीत रखे हैं, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा। अच्छे मुकाबले होने चाहिए सुपर 8 में तमाम ही मैच। इरफान अलबत्ता मुज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। अभी हमने जो बात शुरू की थी, जो 3 टॉप टीमें लग रही हैं, पेशावर, कराची और रावलपिंडी, इसके अलावा एबटाबाद की टीम ने भी बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री हासिल की कल रात को। यहाँ पर एक आ रही है टीमों में, एक डिवीजन आ रही है कि वो गैप बनता हुआ नजर आ रहा है पॉइंट्स टेबल पर।
और आज और कल के बाद वो काफी वाज़ेह हो जाएगा। ब्रिलियंट बॉलिंग, टिपिकल सोहेल की इनिंग्स को रैप अप करने के लिए आए हैं। गो के सोहेल की बॉलिंग में शायद वो पेस अब नहीं रहा जो कि अब से 5 साल पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी वो अपने पेस को वेरी करते हैं। और वो जो फेमस इनकी चीख है, ख़ासतौर पर स्लो वन के मौके पर भी बैट्समैन को चकमा देने के लिए जाती है, और ख़ासतौर पर जो इनको पहली मरतबा सामना कर रहे होते हैं या टेल एंडर्स, उनके लिए काफ़ी साबित हो सकती है। क्या सोच रहे होंगे असद शफीक, अभी खेल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कंसल्टेंट के तौर पर भी इनकी नुमाइंदगी का ऐलान किया है। फील्डर्स के सर के ऊपर से, लेकिन कवर के फील्डर तक नहीं पहुंच पाएगी ये गेंद। सो पेशावर क्लियरली टॉप कर रहा है अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में, जहां पर आज उनको एक और मरतबा लो स्कोरिंग मैच जीतने का मौका मिला। और कई मौके पर आपको हाई स्कोरिंग गेम्स का इंतजार रहता है, लेकिन जो थ्रिल क्रिएट करता है एक छोटा टोटल, उसकी बात ही और थी। और आखिरी गेम तक लाइव रहा जहां पर 6 चाहिए था, लेकिन पेशावर की सेंस ने प्रिवेल किया, एक्सपीरियंस उनका बहुत साबित हुआ। उसके साथ साथ रावलपिंडी भी हम कदम है। 93 पे 8 लाहौर वाइट्स। कराची की इस जो कामयाबी का राज तो हमने देख लिया, लेकिन लाहौर का पोस्टमार्टम करेंगे तो उनके पास शायद कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जो कि आप तब्दील करने के लिए अपने स्क्वाड को साथ लेके चलते हो। कमोबश इसी अंदाज का स्क्वाड होगा जिसके साथ कम बैक करना पड़ेगा। ना सिर्फ विकेट्स ऐसी गिर चुकी हैं जिसके बाद अब कम बैक इम्प्रॉबेबल है, बल्कि इसके साथ साथ रन्स में भी पीछे है। तो लाहौर के लिए बड़ी मुश्किलात आने वाले हैं मैचेस में, अगर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आपके एक्सपीरियंस प्लेयर और ख़ासतौर पर जो इनकी मिडिल ओवर में बैटिंग के दौरान हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, अगर वो स्टेप अप नहीं कर रहे तो ओपनर्स आपको जैसा भी स्टार्ट दे दें, वो शायद ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम्स के अलावा सुपर 8 में आपको उठने का मौका नहीं देगा। बिल्कुल, और अभी तक हम अहमद शहजाद की फॉर्म की बेसिस पे देख रहे थे लाहौर वाइट्स राइड कर रहा था, लेकिन ये मुकाबला ज़रा सख्त है। यहाँ टीमों जो बैलेंस है दोनों टीमों का या तमाम टीमों का वो बेहतर है, मुकाबला कड़ा होने की तवक्को है। तो आप एक प्लेयर की फॉर्म पे रिलाय नहीं कर सकते, और वो भी आज जल्दी आउट हो गए। आरिफ याकूब अगेंस्ट द टर्न, मुतवक्के था कि वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे। गुलाम मुदस्सिर इस जानिब से गेंद कर रहे थे जिन्होंने मैजिकल ओवर किया 2 विकेट्स वाला, लेकिन आरिफ याकूब अपने आखिरी ओवर के लिए आए। गुगली इस मरतबा टॉप एज, लेकिन फील्डर्स की पहुंच से दूर, उमैर नहीं पहुंच सके और 4 रन। तो जाते जाते इरफान की सूरत में लाहौर वाइट्स का ये दिया टमटमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मरतबा फिर अपनी लॉन्ग रीच का फायदा उठाया, पूरा स्ट्रेच करके इसको खेलने के लिए गए थे। गो के बल्ले के एंड दरमियान से ना निकल पाई, लेकिन जो स्विंग मौजूद था उसने इसको जाते जाने का मौका दिया। और अब ये शायद वक्त आन पहुंचा कि मार्जिन को कम करने की कोशिश करे लाहौर। दोनों लगातार गूगलीज की, पहली पर बीट हुए इरफान और दूसरी को कनेक्ट करने में कामयाब हुए। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, थोड़ी तेज गेंद करने की कोशिश की, हबीब ने फंबल किया। वेरिएशंस अच्छी हैं आरिफ के पास, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि पहली गूगली की फिर दोबारा गूगली की, ज़्यादा वेरिएशन उस वक्त करते हैं जब अपने एक प्लान को कुक कर लेते हैं थोड़ा, अनलाइक सम एक्सपीरियंस बॉलर्स, जिनके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स रादर, जिनके पास वैरायटीज तो होती हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हर बॉल पे चेंज लाएं, हर बॉल पे चेंज लाएं, जिसमें बैटर को आप ज़्यादा मौके दे देते हैं। लेग स्पिनर से मुकाबला था, लेकिन असद शफीक इसको अपना मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा पाए। अपनी से कोशिश की, बड़ी तेजी से गेंद ट्रैवल करके पहुंची थी, रिएक्शन टाइम भी कम था सामने मौजूद असद, लेकिन ग्रैब न कर सके। थोड़ा सा लगता है कि अपनी डाइव को मिस टाइम कर गए, शायद ज़्यादा तेज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बॉल को। बहुत क्रूशल होती है आपकी जंप की जो टाइमिंग है, इसमें चूक गए असद।
क्विक सिंगल पहुंचने के लिए कामयाब रहे, हालांकि थ्रो अगर ऑन द टॉप ऑफ स्टंप्स होती तो शायद ऊपर जाना पड़ता और इसका फायदा उठाकर दूसरे रन के लिए भी वापस आ गए। 100 मुकम्मल हो गए लाहौर वाइट्स के 101 पे 8। फिर ड्रामा हुआ आखिरी बॉल पर, क्विक सिंगल लिया इरफान ने और थ्रो वाइड थी, आजम की पहुंच से दूर। दानिश अजीज थे फील्डर और फिर दोबारा तेजी से थ्रो आई। इस मरतबा जेलर पहुंच गए लेकिन आजम खुश नहीं थे दानिश से, जो कि जमीन पे ही लेटे हुए थे उस वक्त, और आजम ने गेंद दे मारी दानिश को। लेकिन दोनों खिलाड़ी मुस्कुराते रहे, कोई ऐसी इसमें अचंभे की बात नहीं है। इस तरह की शरारत खिलाड़ी कर दिया करते हैं कभी कभी, खासतौर पे जब मैच भी बिल्कुल काबू में है। न्यू लुक पोस्टर बॉय कराची और सिंध की क्रिकेट के लड़काने से ताल्लुक रखने वाले गेस्ट प्लेयर के तौर पर आए हैं, और आज ना सिर्फ ये कि वो दिखने में अलग लग रहे हैं, हेयर स्टाइल भी जुदा जुदा है, बल्कि बॉलिंग भी उन्होंने शानदार की है। बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया अपने रिहेबिलिटेशन के बाद, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम शाहनवाज अली धानी के लिए। एक मौके पर तमाम बॉलर एक साथ आ गए थे, शाहनवाज अली धानी, हसनैन, नसीम शाह, जिनमें से क्लियरली नसीम शाह तो ग्रेजुएट करने में कामयाब हो गए अगली लेवल पे, लेकिन वो जो फास्ट बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं शाह फैसल के, जो आपको वल्नरेबल रखती हैं, और उसके साथ साथ शायद इनकी रिस्पेक्टेड टीम मैनेजमेंट्स का, या अगर PSL फ्रेंचाइजेस में खेलें या फिर PCB का, रोल बड़ा बढ़ जाता है कि आप इनके वर्कलोड को किस अंदाज से मैनेज करते हैं, क्योंकि बड़ा ये अछूता असासा होते हैं कि जो इनको आप शायद ओवर यूज़ कर जाएं तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स आते हुए देखिए जी। बिल्कुल, इन पर्टिकुलर, और जब आप एक नौजवान फास्ट बॉलर हों, करियर में आपने ज़्यादा बॉलिंग की नहीं होती, क्योंकि पहले ही सीज़न के बाद ये पिक हो गए थे पाकिस्तान की टीम में, तो जो उनकी बॉडी थी वो उतनी ज़्यादा रिगर्स के लिए रेडी नहीं थी। अगर 1-2 साल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते तो ज़ाहिर है कम उम्र भी हैं, पूरा एक सब्जेक्ट है ये, इस पे बात करेंगे। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर आजम खान, जो कि हमें पता है कि बहुत एंजॉय करते हैं अपनी क्रिकेट को, दानिश ने नजदीक से बहुत ही तेज थ्रो मारी जो शायद आजम को पसंद नहीं है, और फिर भी आजम से भी काफी दूर थी। यहां आजम ने बदला चुकाया। आजम जब फील्ड पर हो तो एंजॉय करते हैं, ये उनकी खास बात है। जेलर ने इंतजार किया गेंद का, स्लोअर बाउंसर था। जेलर ने यहां ये बात जरूर बतलाई है कि एक्सपीरियंस का कोई नेमोल बदल नहीं है। बॉलिंग में भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की, बैटिंग में भी। अब जाहिर है कुछ ज्यादा खेलने को नहीं है उनके पास, लेकिन वो कम से कम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अपनी विकेट पे उन्होंने प्राइस लगाई है, और जैसे अखिल आप बात कर रहे थे, हु नोस के लेटर स्टेजेस पे 1/4 पोजीशन के लिए आपको नेट रन रेट की ज़रूरत आए, तो ये जो वैल्यूएबल 10, 15, 20 रन जितने भी वो जोड़ पाएं, वो ज़रूर काम आएंगे आखिर में। दहाड़ी हिट करने की कोशिश कर रहे थे स्टम्प्स को, लेकिन बार बार अपनी लेंथ में चूक रहे हैं, और रैप अप करने का बड़ा नादिर मौका है असद शफीक के पास। बड़ी लेगेसी है इस कराची वाइट्स की टीम की, जो कि कैरी कर रहे हैं शायद उस टीम को जो कि कराची डॉल्फिन की सूरत में होते थे, जिसमें शायद आफरीदी टीम करते थे। सोहेल खान तब से लेकर अब तक उस टीम का थ्रू एंड थ्रू हिस्सा रहे हैं। खुरम मंजूर भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं, और ये जो नई पौध आई है जिसमें उमैर बिन यूसुफ ने आज बड़ी शानदार शॉट का अपने रेंज का मुजाहरा पेश किया, वो सब देखने से ताल्लुक रखता है। बॉलर के सर के ऊपर से सीधा तेज तर्रार चौका, जो कि मार्जिन शायद कम करेगा और हौसला देगा मजीद इरफान को। बिल्कुल, और इस बाउंड्री के साथ ये इनिंग्स की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप बन गई है, जिससे आपको अंदाजा होगा
कि कितना स्ट्रगल किया है लाहौर की टॉप ऑर्डर ने। इस मरतबा स्लो डिलीवरी थी, उसको रीड किया और फिर वेट किया इरफान ने। अच्छी नज़र उनकी जम चुकी है यहाँ पर। 14 गेंदें खेली हैं, 22 रन बना चुके हैं। और ये जैसे हम लेगेसी की बात कर रहे हैं, उसके जो आजम स्टंप्स के पीछे मौजूद हैं, उनके वालिद मोइन खान इस टीम को लीड करते थे। इससे पहले कप्तान थे। कराची ऑन द टॉप है, लेकिन मैच अभी भी बाकी और रात बाकी। 16 ओवर्स के बाद लाहौर वाइट 6-9 पे 8। Look away if you're a Lahore supporter, because this is not something to be proud of. Tayyib Tahir 36 and now Irfan on 26. Lahore Whites have definitely been rocked by Karachi Whites. Sohail Khan. Let's see if there's a fielder, just one more run. Marina Iqbal, not so happy Marina Iqbal, because you get disappointed when you see a team going down like this. When you look at the strength on paper, you see big names, really big names who have potential to win games single-handedly. And when they walk out in the middle, it's a total different ball game. I think the irresponsibility, they have to be accountable towards each other and also towards themselves as well, because this is not the quality of cricket you expect at this level. Yeah, you're right. Use the right word, irresponsibility. Back of the hand. Irresponsibility / casualness is what I can think of from this performance of Lahore Whites. Is similar to what Lahore Blues were in a position against the same opponents, Karachi Whites. It's pretty disappointing. I think really they need to work on their first, their playing 11, then their shot selection, and maybe they need to question seriousness of few players, because that's not how big teams play. Pretty disappointing. There is a fielder, should be able to take it. He does, quite easily. Ahmad Alam, the fielder again, 9 down. Ramiz Jr. trying to pull out something miraculous, but he's failed actually. Trying to take on Sohail Khan. It's never easy to take him. He's a prolific bowler. He does it well with the newer one, and have a look at that back of the hand. I think Ramiz never read it, and all he did was trying to hit big, ending up giving a catch. It was well judged actually, but it's all in the end now. You cannot blame these players. It's the top order, it's the middle ones, the ones who have ample experience. They are to be blamed. 9 down now. Mohammad Ramiz Jr. gone on 5, 110 for 9. Amir Khan. One thing they should learn, these late middle order batters, is Irfan is there, he's playing well. There is no need to become a hero. Just stay there with him. He'll do the running. He has more potential. He has more capability of doing it. But they're just coming and going, Marina. What's happening? I'm actually really impressed by Mohammad Irfan. It's Mohammad Amir Khan now, who's walked out in the middle. Especially about his game awareness. When he was bowling, he was very well aware. When he's batting, he was very well aware of what is required. Oh, good ball. Right up front. Hard length by Sohail Khan. It's never easy for tailenders to deal him. And even in batting, he's shown some resilience, which others were missing. He had a plan against bowlers who were up front attacking. The smile on his face, on Amir's face, says it all. That he didn't get it. He didn't get the swing. He didn't get the line. And we don't expect him to do it also. He's playing at number 11. It's not his fault. It's Ahmed Shahzad's fault.
It's Umar Akmal's fault. It's Saad Naseem's fault. It's Munif Wasif's fault. Ball aim. That's it. End of the game. Lahore has been rocked by Karachi Whites. That's quite a comprehensive win by Karachi Whites. Lahore bowled out on 110 inside 17 overs. That's embarrassing for Lahore Whites. On the other hand, nothing taking away from this team. They played like champions. Sohail Khan doing what he does the best. He's cleaning up the tail-enders of Lahore Whites. That was a brilliant delivery. A wild swing from Amir. He was nowhere near the ball. Just trying to take on again, but failed. This time, the furniture is being dismantled. It has been a dominating performance by Karachi Whites, whether it was batting, rebuilding phase, fielding, and as well as bowling. But Lahore Whites knew they were up against some really good bowling. I really doubt that they had any planning, and the execution was way off mark. Absolutely. I think Karachi deserved this win. They planned better. They executed beautifully. Amir Khan had no clue. He had to go back along with Irfan. He has to take him with him because Lahore Whites have been bowled out twice now in this Super 8. He will be disappointed, the captain Saad Naseem, but this is a happy camp led by Sohail Khan. It was never going to be easy chasing down that score against this quality bowling lineup. But Lahore should be disappointed. Early on, they let Karachi Whites get to that score, which was a little tough on this pitch to chase down. And definitely, they were short of many runs, not just few, but many runs. Disappointed faces in Lahore's camp, and rightly so. They need to scuffle their players, their strategies, their execution, because it's going nowhere for Lahore Whites. And obviously the teams are getting better, they are taking responsibilities, and it is required of Lahore Whites. They've got experience, they've got potential, but it's of no use if you cannot execute in the middle. Karachi, they were clinical, especially in terms of bowling. 3 pacers, taking responsibility up front, and then the spinners doing the job. Very immaculate in terms of line and length. And congratulations to them, a dominating performance, winning by 63 runs. Yeah, they've beaten Lahore in all 3 departments, batting, bowling and fielding. They fielded brilliantly. That catch from Ahmad has to be the catch of the tournament. And that's when things started happening for Karachi Whites. There's really nothing to talk about, seriously. Just Tayyib scoring 36 runs. Irfan, in the end, showed some resistance, some fight, but was not enough. He was not out on 27. Lahore Whites bowled out on 110. Have to give credit to them. Sohail, Dhani and Mudassir starting off. These pacers made the impact. 3 for Sohail, Dhani with 2 and 2 for Mudassir as well. Brilliant spells by these 3 pacers, and then Arif and Danish grabbing 2, Arif 1. But they have been clinical. They have been lethal in terms of bowling. They've been hitting the right areas, and they managed to restrict Lahore on 110. Right, let's have a look at how wickets fell. Shahnawaz Dani got the first wicket. Great length, hard length, getting the best of the batter, and then it was Ahmed Shahzad, the biggest wicket for them. Sohail Khan had to be the man. Shahnawaz Dani again with that length, he's been brilliant, and the catching has been wonderful from Karachi side. Umar Akmal, casual approach, one more time, disappointing and letting his team down. This is the catch of the tournament. We've been talking about Marina. Brilliant work by Ahmad Alam. Yeah, that's what you expect of a youngster standing out in the field. Easy dismissal, soft dismissal. Again, a big question mark on shot selection. He was nowhere near the ball. Again, just allowing the ball to come near. Ghulam Mudassir was immaculate. Another good catch by Umar. And just wrapping things up was Sohail Khan trying to take on the shorter length, but was nowhere near Amir being bowled on the last delivery. Right, Lahore won the toss, invited Karachi to bat first, and they did it brilliantly. 173
Khurram Manzoor scoring 50, but it was that inning of Umair bin Yusuf that gave them the momentum, scoring 43 in the end. Azam Khan scored 21. Irfan getting 2 wickets. And in reply, Lahore were bundled out on 110. Tayyib being the highest scorer, 36. Sohail, Dani, Mudassir, everyone bowled beautifully. And Karachi Whites won this game by 63 runs. Right, Marina, let's have a look at the points table. Karachi Whites climbing up. They're at number 4 now. 3 matches, 2 wins. They've lost 1, but most importantly, they're on 4 points. Lahore Whites need to do something and do it quickly. And also that net run rate, Marina, negative 2.11, that's going to hurt them. Definitely. And we all know that top 4 teams will play semi-final. Right, let's take a short break. When we come back, we'll have presentation all set for you. Hello and welcome to the post-match presentation, and what a game it has been for Karachi Whites, outplaying Lahore White in this game by 63 runs and grabbing 2 important points on the table in the Super 8 and the National T20. For the awards to be given away, we've got a couple of guests. To my left, Umair Iftikhar, GM Events and Operations, Trans Group. And next to him is Mr. Muhammad Ali, who is the PCB representative. We'll request Muhammad Ali to please step forward and give away the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of 25,000 to Sohail Khan for his great spell of 3 for 19. Brilliant performance on a day where spinners had more say. Sohail Khan's brilliant spell, 3 for 19, earns him this AH Group Outstanding Performance of the Match Award. Now over to Mr. Umair Iftikhar, who will now present the Jazz Player of the Match Trophy and Cash Award of 25,000. And that goes to opening batter Khurram Manzoor for his 50 runs of 37 balls with the 9 boundaries. Khurram Manzoor की शानदार परफॉर्मेंस रही, ओपनिंग बैटर के तौर पर 50 बनाए, 9 चौके लगाए 37 गेंदों पर.
talk to Khurram. मैंने आपसे मैच से पहले बात की थी कि बैट बात नहीं कर रहा, आप सीरियस ले गए मेरी बात को? नहीं, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने एक मुश्किल पिच पे एक अच्छा टोटल किया जिसमें पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि पिच आसान नहीं था ऑनेस्टली। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने परफॉर्म किया है, पिच पे बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था तो टाइम लेना बनता था, जो हमारी मैनेजमेंट और स्पेशली कप्तान भी, कि आप टाइम ले लो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है, तो कोशिश की कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया तो अल्लाह ने उसमें मदद की। टॉस पे असद ने बताया था कि टीम ने पहले ही सोचा हुआ था कि हम पहले बैटिंग करेंगे, चाहे टॉस जीते या हारें, तो कोई प्लान था कितना स्कोर रखना है पावर प्ले में माइंड में एज ओपनिंग पे? नहीं, हम लोग का वाकई यही प्लान था कि हमने टॉस जीतना तो बैटिंग करनी थी, और हमारी एक चीज़ थी कि जो हम लोग पिछले मैचेस में मिस कर रहे थे कि हमारे ऑफिशियल्स और कैप्टन कह रहा था कि बैट्समैनों ने पूरे 20 ओवर खेलने, और कोई ऐसा हमने जहन में प्लान नहीं किया हुआ था कि हम 200 करेंगे, 180 करेंगे। तो कोशिश किया आज हमारा जिस तरह उमैर आया और जिस तरह उसने फिनिश किया, तो हमें एक था बिलीव कि अगर हम लोग बैट्समैन अगर पूरे ओवर खेलेंगे तो हम अच्छा टोटल करेंगे। एज अ सीनियर मेंबर आपके साथ पहले एक यंग ओपनर जाते हैं, वन डाउन पे भी हबीब आए, कितना एक्स्ट्रा रोल होता है आपका उनके साथ बैटिंग करने में? देखें, एज ए प्रोफेशनल अगर ऑनेस्टली बात की जाए ना, तो आपको पेन लेना पड़ता है। आप सीनियर हो, जूनियर हो, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी। तो कोशिश करते हैं कि एज ए सीनियर भी फ्रंट से लीड करें, और जिस तरह सपोर्ट मिल रही है तो उम्मीद कर रहा हूँ इंशाल्लाह इसी तरह ये फैमिली जिस तरह चल रही है तो आगे मैचेस में अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, कांग्रेचुलेशंस ऑन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। थैंक यू। खुर्रम मंजूर wins himself the player of the match award for this game. Now I'll request Saad Naseem to come and have a word with us, please. Saad, am I good? Okay. आज की परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल एज अ कैप्टन? पहले बॉलिंग और उसके बाद बैटिंग। जी बिल्कुल, जो हमारी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है उसकी वजह से इतना टोटल हो गया। लास्ट के 3 ओवर में 42 रन हो गए थे। पहले बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, एक्सपीरियंस नहीं है बॉलर्स को। कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो दूसरा तीसरा मैच खेल रहे हैं, नवीद का दूसरा मैच था, रमीज़ का दूसरा मैच था, आमिर खान तीसरा चौथा मैच खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से बोर्ड पे 170 आ गया था, थोड़ा प्रेशर आ गया था बैटिंग के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है इस कैप्टन की ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है पावर प्ले में अगर अच्छे रन हो, क्योंकि प्रेशर नहीं होल्ड कर पा रहा मिडिल या लोअर मिडिल ऑर्डर? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सर्कल में अगर बड़ा टोटल हो जाए, 170 रन हुए हो, तो आपको फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर आपको यूटिलाइज़ करना पड़ता है, 50 से 60 रन करने पड़ेंगे, तो फिर आप ये अचीव कर सकते हैं टोटल। छठे पे है अभी आपकी टीम, और छठे पे ही है, हारने के बाद भी ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन शायद नेट रन रेट में फ़र्क पड़ेगा। क्या प्लान आप सोच रहे हैं एज कैप्टन? कौन से एरियाज आप फ़ौरन करेक्ट करना चाहेंगे? जो बॉलिंग हमारी है एक्सपीरियंस, कोशिश करेंगे कि उसको हम करेक्ट करें, और बैटिंग में जो मिस्टेक्स कर रहे हैं बैट्समैन, लूज शॉट मार के आ रहे हैं, कोशिश करें कि वो ना करें, और जो बैट्समैन सेट हो जाए तो वो पूरा ख़त्म करके आए। Very hard luck today and good luck for the games to come. Saad Naseem, the captain of Lahore Whites, and now Asad Shafiq will have a word with us, the captain, the winning captain of Karachi Whites. Asad, congratulations पहले तो जीतने का। कितना आसान या मुश्किल होता है एक हार कल और एक जीत इतनी बड़ी आज, टीम की मोटिवेटेड रखना टीम के लड़कों को? जी देखें, मुश्किल तो होता है, लेकिन हमारी कल मैच के बाद भी बात हुई थी कि जो गलतियां हम कर रहे हैं उनको कट डाउन करना है, और बैक टू बैक जब मैचेस होते हैं तो एक तरह से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जो परफॉर्म कर रहा होता है वो चाहता है कि ज़रा ब्रेक के बाद मैच हो, लेकिन जिससे परफॉर्मेंस नहीं होती उसके लिए बैक टू बैक जो मैच होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट बैटिंग की तो हमारा यही प्लान था कि जो है हमने अराउंड 160+ रन करने हैं, क्योंकि ये पिच जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करती है, बीच में आसान नहीं होता रन बनाना सर्किल खुलने के बाद। आज हबीबुल्लाह को आपने खिलाया तो 3 पे वो खेले, सब एक नंबर नीचे आ गए। उमैर का अच्छा रोल रहा है एज अ फिनिशर? जी, उमैर थ्रू आउट जो है वो पहले मैच से बड़ा अच्छा जो है वो, क्योंकि वो पहले ओपन और वन डाउन ही खेला है हमेशा, तो आज जब उससे बात की तो वो फ्लेक्सिबल था। उसने बोला ठीक है, अगर टीम की ये रिक्वायरमेंट है तो यही होता है एज अ टीम प्लेयर। जब आप होते हैं टीम में ऐसा कुछ होता है और आपका नंबर चेंज होता है, लेकिन उसने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, और मेरा ख्याल है जिस तरह से उसने फिनिश किया आखिरी के 3-4 ओवर में जो बैटिंग की है उसने डिफरेंस क्रिएट किया। अब तो फंस गया वो इस नंबर पे। नहीं, देखें ये टाइम टू टाइम और विकेट के हिसाब से और ऑपोजिशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर हमारा इतना फ्लेक्सिबल है कि हमें पता है कि किस बैट्समैन को किस टाइम भेजना है। एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा, आज इस आपकी इनिंग से पहले 14 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी और आपने अपने फास्ट बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। बॉलिंग यूनिट, हालांकि 174 अच्छा बड़ा स्कोर था इस पिच पे, हैप्पी हैं जिस तरह से ये सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग यूनिट के तौर पे? जी बिल्कुल, एज अ कैप्टन आसान हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए जब आपके बॉलर जो है फायर कर रहे हो सही तरह। और मेरा ख्याल है धानी आज पहला मैच खेल रहा था, उसने जो है हमें अर्ली ब्रेक थ्रू करके दिया, और सीनियर बॉलर सोहेल तो थ्रू आउट
पहले मैच से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, गुलाम मुदस्सिर भी बहुत अच्छी। अगर आपके मेन बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं स्पिनर्स का जिस तरह से हमारा लेग स्पिनर बॉल कर रहा है और दानिश, तो मेरा ख्याल है एज अ बॉलिंग यूनिट हम एक बड़ा अच्छा शो प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए, गुड लक टू यू फॉर द गेमिंग इज कमिंग अप और ये मैच बहुत अच्छा जीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Asad Shafiq, the captain of Karachi Whites, winning this match by 63 runs, and that concludes the presentation.
Hello and welcome to the post show. A long day, 2 games, and this is the last one. Karachi Whites versus Lahore Whites. Karachi outplayed Lahore in this fashion. 173 batting first, 4-7. They were asked to bat, don't forget. And Lahore Whites didn't seem in the chase. Lost this match by 63 runs and 20 balls to spare. That will dent their net run rate. Not much to talk about in their batting. It was, I think, all over Karachi Whites' evening. All right, here we are. So let's discuss this in a little bit of detail, where Lahore went wrong and what did Karachi do right, because they lost their game yesterday at the National Bank ground. So I've got Salman Bhatt alongside me, and if you take an aerial view of this game, Salman, let's start with Karachi. I was just asking Asad Shafiq कि भाई कल हार हो और आज जीत जाएं, इतनी जल्दी टर्न अराउंड करना और मोटिवेशन रखना लड़कों की किस तरह से पॉसिबल है? What are the boxes that they ticked very rightly from their last game, according to you? I think the important factor was कि जो उनके सबसे सीनियर प्लेयर थे, खुर्रम मंजूर, he batted through. हमने देखा इस पिच के ऊपर अगर आप सेट होते हैं तो आपके बड़े शॉट्स लगते हैं. अगर आप इसको बहुत जल्दी पुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी विकेट गवा बैठते हैं. सो सीनियर प्लेयर लाइक हिम, और उसने भी अपने शॉट चूज़ किया. आपने देखा स्वीप पे काफ़ी उन्होंने रन्स हासिल किए, स्लॉग स्वीप पे रन्स हासिल किए. स्पिनर्स को वो दूर से स्वीप करते हैं अच्छी तरह, एंड इफ़ यू स्वीप तो फिर होता ही है कि उसके साथ फिर आपको कट भी मिलती है. और जो मैच्योर बैटर है वो ये रियलाइज़ करता है कि अगर मैंने 1-2 स्वीप मारी तो अब ये थोड़ा पीछे लाइन को खींचेगा या फुल करेगा, तो वो रेडी थे. उन्होंने फिर कट पे भी रन्स किए. सो आई थिंक इट वाज वेरी टैक्टिकल, एंड ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस वो इनिंग्स में मोमेंटम रहा. एंड टुवर्ड्स द एंड एक जगह मिडल में जाके जब आजम भी 21 रन पे आउट हुए और उसके साथ हबीबुल्लाह थे शायद, दानिश वो भी 21 रन पे, लेकिन उसके बाद जिस तरह उमैर बिन यूसुफ ने उस इनिंग को पकड़ के आगे से फिनिश किया एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, आई थिंक दैट वाज द की जहां पर कराची को वो टोटल मिल गया था. एनीथिंग अबव 160 ओवर हियर सो फार कंफर्टेबली टीम्स ने अचीव नहीं किया एक्सेप्ट पेशावर. उमैर ने एक नया रंग दिखाया आज. उमैर यूजुअली नंबर 3 पे खेलते हैं, ओपन भी कर चुके हैं, 6 नंबर पे फिनिशर का रोल दिया. मैं आज कह रहा था ऐसे कि अब तो वो फंस गए इस नंबर पे. नहीं, आई थिंक एक कंप्लीट बैटर हैं, और यस यू कैन से कि उनकी गेम में एक और एडिशन है, बट मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का वास्ता है उनका नंबर नीचे मत कीजिए, क्योंकि जो बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेलने की कैपेबिलिटी रखता हो तो ये उसका एडिशनल फैक्टर तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन डोंट टेक अवे एवर दैट फैक्टर. सबसे बड़ी मिसाल इफ्तिखार हैं. वो एक ऐसे प्लेयर थे जो ओपन पे आते थे डोमेस्टिक में, उनकी वजह शोहरत सेंचुरियाँ थी, लेकिन जब से वो मिडल में गए हैं तो अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं उस नंबर पे. तो आई थिंक प्लेयर्स को अपने आप को बड़ी इनिंग्स के लिए जहन बनाना चाहिए. ओके, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द पॉइंट्स टेबल. मैंने कहा था कि 6 पे थे पहले मैच से पहले लाहौर वाइट्स, और अभी भी शायद 6 पे ही हैं, लेकिन नेट रन रेट को बड़ी चोट लगी होगी. इस जीत के बाद कराची वाइट्स है 4 पर और लाहौर अभी 6 पर ही है. और याद रहे टॉप 4 क्वालिफाई करेंगे सेमीज के लिए, लेकिन देखें लाहौर वाइट्स का नेट रन रेट -2.11 गया. तो अब तो ये इसको तो आप भूल ही जाएं. एज लाहौर वाइट्स के नेट रन रेट को अब आप सही करेंगे. आपने मैचेस जीतने हैं, टोटल हर टीम 7 खेल रही है, 4 आपके. सिकंदर रन रेट को तो अभी आप भी भूल जाएं, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना टॉप ऑर्डर सही करना है. इनको वहाँ पे रन्स चाहिए. दे आर टू मच रिलायंट ऑन अहमद शहजाद एंड द रेस्ट आर एब्सोल्युटली फार फ्रॉम फायरिंग. सो आई थिंक द एरिया ऑफ कंसर्न इज कि आप एक प्लेयर पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो हमेशा आपकी टीम जो है वो जेपडी में रहेगी. चलिए कुछ मोमेंट्स देखते हैं मैच के, जो कि शायद गेम चेंजिंग मोमेंट्स रहे हों. मोहम्मद इरफान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आज. कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं इस में जो लाहौर वाइट्स पॉजिटिव्स के तौर पे निकाल सकता है. इस ओवर में इन्होंने 2 विकेट्स हासिल की थी, और ये देखें इनको. देखिए इरफान ने बिल्डअप किया. अब देखिए आप उसकी जोन में बॉल नहीं कर रहे, और इसका इन्हें फ़ायदा हुआ. यहाँ पर कोई बाजू खोलने के लिए रूम नहीं दे रहे बैटर को, स्पेशली लेफ्ट हैंडर की अगर हम बात करें. और जब अटैक करें देखिए स्टंप्स में या अपनी फील्ड की तरफ बॉलिंग कर रहे हैं. तो इंटेलिजेंट चीज़ ये है कि आप अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कीजिए, तो बैटर्स को कुछ करने का, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने में फिर वो विकेट देते हैं. साद नसीम ने अभी बात की कि हमारी बॉलिंग थोड़ी यंग है और इनएक्सपीरियंस है, लेकिन शायद ब्लेम बॉलिंग पे इतना जाता नहीं जितना बैटिंग पे जा रहा है, कि वो चेस भी नहीं कर पा रहे और ना ही वो ऐसा कोई स्कोर डाल पा रहे हैं अगर अहमद शहजाद नहीं परफॉर्म. देखिए अगर तो ये फैक्टर कंसिडर कर लिया जाए, जैसा वो कह रहे हैं कि बॉलिंग यंग है, तो मोहम्मद इरफान की 450 फर्स्ट क्लास की विकेट्स हैं. उसके साथ जो आप कह लीजिए कि इनकी फास्ट बॉलिंग है, आमिर को इतने बुरे बॉलर नहीं है. और अगर लेट्स से बैट बॉलिंग थी, लेकिन इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग, इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, 170 यहाँ पर और इस वक्त इतनी ड्यू थी, इन्होंने वो कैपिटलाइज ही नहीं किया, वो वक्त ही नहीं गुजारा. अभी आखिरी 4 ओवर्स 5 ओवर्स पड़े थे और ठीक ठाक ड्यू थी. अगर कोई बैटर्स खेल रहे होते
तो 4 में 50 रन भी बनते हैं लास्ट में. सो दे हैव टू स्ट्रेच देयर इनिंग्स फॉर द लॉन्गर पीरियड, जो हो नहीं रहा. अच्छा, कल सलमान ने हमारे इसी शो पर एक्सप्लेन किया था हुरैरा कहाँ गलत जा रहे हैं, या उसको पॉइंट आउट किया था उनके एक कोच की मदद से भी. आज आपने कुछ पॉइंट आउट किया था कमेंट्री में अमाद आलम का, जो कि कहाँ खड़े, कहाँ स्टांस और किस तरह उनको बिल्डअप किया. ये भी एक बिल्डअप था. आप देखिए नवीद की तमाम बॉलिंग जो है वो ऑफ स्टंप के वाइड मार्कर के पास है. वो चाह रहे हैं कि अमाद आलम अपनी रेंज से बाहर जाएं, और अमाद लेग स्टंप पे खड़े खड़े वहीं से अपना बैट स्विंग किए जा रहे हैं. ऐसे में कम्युनिकेशन लाजमी है. अगर ये ऑफ स्टंप का गार्ड लेते और इस तरफ जाते तो ये मिडल हो सकती थी ये शॉट. ये जो बॉटम पे लगा है बिकॉज ही स्टूड एज ग्राउंड, उन्होंने अपना गार्ड ही चेंज नहीं किया. ही नेवर मूव्ड क्लोज टू द बॉल. एंड यहाँ पर जो ऑपोजिट एंड पे खुरम खड़े हैं, इतने एक्सपीरियंस बैटर, वो भी जाके कम्युनिकेट कर सकते थे, पर मे भी उनके दिमाग से ये बात ना गुजरी हो. इस चीज़ को करेक्ट कौन करेगा, क्योंकि ये इनिशियल डेज में है. हुरैरा भी अपने करियर के स्टार्ट में है, यंग है, अमाद भी यंग है. ये चीज़ें पॉइंट आउट होंगी. ऑब्वियसली खुरम मंजूर का हमने जिक्र किया था कि वो एक्सपीरियंस है, नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हैं, वो शायद इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो अगर आप ऊपर बैठ के कर रहे हैं. देखिए अगेन इट इज़ अबाउट ऑब्जर्वेशन. अगर आप सामने खड़े हैं एज अ सीनियर प्लेयर तो आपका ध्यान भी इस तरफ होना चाहिए. पहले तो कोचेज ही नहीं होते थे, तो प्लेयर्स की अपनी ऑब्जर्वेशन थी. अभी भी कुछ प्लेयर्स की अपनी है, बट दे हैव द स्टाफ, दे हैव द एनालिस्ट. ये चारों के चारों बॉल ऑफ स्टंप से दूर थे, तो ये तो इतना एविडेंट है. इट इज़ लाइक वॉचिंग डे लाइट के अंदर आप चीज़ों को देख रहे हैं. तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. वेल, सारी चीज़ें गलत नहीं हुई अमाद की. अमाद अच्छे बैटर हैं, हम जानते हैं, और आज उन्होंने बड़ी शानदार फील्डिंग की. कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था अमाद ने, और एंटिसिपेशन उनकी बहुत अच्छी थी, अवेयरनेस बहुत अच्छी थी रोप की. जी बिल्कुल. यहाँ पर बाउंड्री लाइन का अंदाज़ा रखना और ऊपर की तरफ जंप लिया और उसके बाद अपने आप को बैलेंस किया, और एट द सेम टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड के बॉल को, ये देखिए रिलीज किस टाइम पे किया उन्होंने, और दूसरा कदम नीचे लगने से पहले, एंड देन ही गॉट बैक एंड टुक इट. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एग्जांपल, और ही वाज हिमसेल्फ वेरी हैप्पी. You have to be fit, more of an athlete to do things like these. Anyway, कुछ बात करते हैं कल के मैचेस की. कल भी 2 मैचेस होंगे, कल भी इंपॉर्टेंट डे होगा, बल्कि 2 नहीं 4 होंगे, लेकिन 2 यहाँ होंगे. Let's have a look at what are the games lined up for tomorrow. दोपहर 3 बजे स्टार्ट होगा पहला मैच. लाहौर वाइट्स एक बार फिर यहाँ आएंगे और फाटा से मुकाबला. अब ये 2 टीमें हैं जिनका सिलसिला कुछ इतना अच्छा चल नहीं रहा. फाटा 3 हार चुका है, लाहौर 3 में से 2 हार चुका है. और फिर शाम को लाहौर ब्लूज, ये भी अभी तक मैच नहीं जीते. इनका मुकाबला है स्ट्रॉन्ग रावलपिंडी से रात 8 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से. देखिए फाटा की एक ऐसी साइड है जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलती है. सो लाहौर वाइट को एक तो खुद को बेहतर करना है, और दूसरा उनकी जो एक्सप्लोसिव पावर है उसको भी काउंटर करना है. एंड आई थिंक दे ऑन देयर डे फाटा कैन बी वेरी डेंजरस टीम. तो लाहौर को अच्छा खेलना पड़ेगा. चलिए अब हम आपको रेस्ट करने देंगे, और हम खुद भी जाएंगे रेस्ट करें, और आप लोग भी चाहें तो थोड़ा आराम कीजिए. कल हमें ज्वाइन कीजिएगा एट 2:45 लोकल टाइम, जब हमारी कवरेज शुरू होगी, और मैच होगा 3 बजे. जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. गुड नाइट. Yeah, he gets hold of it. The quicker it comes. He's gone high in the air and takes it. Suhail Khan is the catcher. That's gone. That's gone. Field again के नीचे आ रहे हैं, और इस मर्तबा नहीं बच पाएंगे. और बहुत ही बाहर निकल गए, कश्तियां जला दी थी पीछे. It's high in the air, should be out. Very well done by Ahmad. Ball him. That's it. End of the game.